Well, viewers, those were the exclusive visuals of the Surya Tilak happening there at the Ram temple in Ayodhya. Today it's the occasion of Ram Navmi, and devotees throng the city of Ayodhya today to pay obeisance there at the Lord Ram temple. And these were the exclusive visuals that we were getting for you from that particular Ram temple. Remember, today it's a crucial day that marks the birthday of Lord Ram, and there you can see the puja happening with all the rituals over there. Joining me live on this broadcast is my colleague Ajay Dubey. Ajay, right now we're getting these exclusive visuals from Ayodhya. What is the atmosphere like? Because from what we can see, it's aesthetic, and all the devotees over there glaring at that Surya Tilak happening right now. Definitely, right now more than thousands of devotees are in the front of temples only, and more than lakhs of people are around the road. So millions are there to do the darshan of Prabhu Sri Ram, and arrangements have been done. High-level security arrangements have been done, and we have seen beautiful visuals where we have seen the sunlight tilak of the idol of Prabhu Sri Ram, and right now so many people are in lines to do the darshan, and heavy security arrangements have been done. So we have seen more visuals in the morning where police is doing march past, police is doing a flag march, and later on we have seen modern technologies being used for the security arrangements. And right now continuously people are coming to do the darshan of Prabhu Sri Ram, not from just from Ayodhya, not just from Uttar Pradesh, but from all corners of countries, and they're doing darshan of Prabhu Sri Ram. It's a very auspicious day. It's a birth date of Prabhu Sri Ram. It's Ram Navmi, and as we can watch in the visuals, it is very beautiful to see this darshan here in Ayodhya. Well, thank you, Ajay, for those details. We'll continue to come back to you as we get these exclusive visuals from Ayodhya. खुद भगवान सूर्यदेव नीली नीली अपनी आभा लेकर नीले नीले किरणों से मणि के समान उनके मस्तिष्क पर चमक दे रहे थे। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही दिव्य और भव्य यह नज़ारा रहा जो दुनिया अयोध्या से देख रही है कि प्रभु श्री राम का जन्म हो चुका है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि हम महाराज जी से बात कर रहे हैं, सीधा उसको दिखाने का काम करें। महाराज जी, जिस तरह से सूर्य देवता ने अपने सूर्य कुल वंश भगवान राम लला का आज उनके जन्म के उत्सव पर उनका सूर्य तिलक किया है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से प्रत्यक्ष भगवान सूर्य देव जिस प्रकार से अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह अद्भुत अलौकिक अप्रतिबिंब छटा दर्शन करने को जो मिला, यह अकल्पनीय अविस्मरणीय यह क्षण था। संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह था, जो लालसा थी, वह लालसा पूर्ण हो गया। भगवान जब सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके यह संदेश देना चाह रहे हैं कि यह राष्ट्र का मंदिर है। राम का मतलब होता है जो राष्ट्र का मंगल करे। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मनि एते राम पदे नासो प्रब्रह्मा विधीयते। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया था तब भी भगवान सूर्य का उपासना किए थे। अपने सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को तिलक करके संपूर्ण जनमानस का कल्याण कर रहा है। संपूर्ण जनमानस के अंदर जो उत्साह, जो लालसा थी, वह पूर्ण हो गया। हम लोग उसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। संपूर्ण जनमानस के अंदर यह उत्कंठा थी कि भगवान सूर्य अपने कुल के गौरव बालक को कैसे तिलक करते हैं। उसी मध्य क्षण में जिस सन भगवान त्रेता ने में 1 महीना का दिन कर दिया था और 1 महीना तक दिन करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे, आज 3.5 से 4 मिनट भगवान अपने रोशनी से, अपने तिलक से उनको अभिभूत तिलक कर दिया। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जो रघुवंश के नाथ हैं, ऐसे अकारण करुणा कृपा करने वाले भगवान राघवेंद्र सरकार को तिलक करके हम लोगों को आह्लादित कर रहे हैं। हम
हम लोग सब आनंदित हैं, आह्लादित हैं, बड़ा ही आनंद है। बहुत बढ़िया महाराज जी, क्या कहेंगे ये अद्भुत क्षण जो दृश्य देखा गया, इसके पहले अयोध्या के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा गया कि स्वयं दुनिया को जीवन देने वाले भगवान सूर्यदेव अपने रामलला का मस्तिष्क पे तिलक कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये जो दृश्य है? देखिए, पूरे विश्व ने देखा, ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व ने देखा है कि कैसे हमारे प्रभु श्री रामलला का सूर्य किरण, भगवान सूर्य स्वयं अपने किरणों के माध्यम से तिलक करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। मैं प्रभु श्री रामलला के पावन जन्मभूमि अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति महोदया जी से यह मांग करता हूं, प्रभु श्री रामलला के इस पावन प्राकट्योत्सव के महामहोत्सव पर, जन्म दिवस पर, कि सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाना चाहिए और राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। काफी टाइम हो गया, पहले बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाएगा। चूंकि आज मौका है, इसलिए आपके मंच के माध्यम से मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि राम मंदिर को राष्ट्रीय मंदिर बनाकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा यहां से फहराया जाना चाहिए और राष्ट्रगान और भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इन दोनों मंत्रों का एक साथ समागम करके और उद्बोधन किया जाना चाहिए, गायन किया जाना चाहिए, जिसको पूरा विश्व देखे। महाराज जी, आपने जिस तरह की मांग की है, इसके पहले अभी किसी के द्वारा इस तरह की मांग नहीं करते हुए देखा गया कि मंदिर पर, यानी कि मंदिर में जो झंडा भगवा लहरा रहा है वहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी हो और इस मंदिर को राष्ट्रीय संज्ञा दिया जाए, यानी कि राष्ट्रीय मंदिर इसको कहा जाए। तो आज आपने कहा है, निश्चित तौर पे यह बात दूर तक जाएगी, तो कल नहीं कल, आज नहीं कल संज्ञान जरूर लिया जाए। देखिए, ये ऐतिहासिक क्षण है और मैं प्रमुख रूप से अयोध्या के राम जन्मभूमि में 3 चीजें रखता हूं। राम जन्मभूमि को राष्ट्रीय मंदिर बनाया जाए, सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाया जाए और जिस प्रकार से प्रभु श्री रामलला के पास गीता, भागवत, वेद, पुराण रखा गया है, उसी प्रकार से राम जन्मभूमि में प्रभु श्री रामलला सरकार के पास में भारत के संविधान की प्रति भी रखी जानी चाहिए। Viewers, those were exclusive visuals that we were getting from Ayodhya over there, Surya Tilak happening on the occasion of Ram Navmi. Moving on, viewers, Prime Minister Narendra Modi has landed in Tamil Nadu for inauguration of Pamban Bridge. There we have those visuals of Prime Minister Narendra Modi reaching Tamil Nadu. He's there to inaugurate India's first vertical lift sea bridge in Tamil Nadu. Now, viewers, this bridge is rooted in mythology. Pambam holds deep spiritual significance as Ramayana recounts the construction of Ram Setu, beginning from Dhanushkodi near Rameswaram, and today on the occasion of Ram Navmi, this inauguration will take place. Joining me live on this broadcast is my colleague Sarda. Sarda, this is a 550 crore project that the Prime Minister will be inaugurating today on the occasion of Ram Navmi. Sarda. Well, the bridge is being built with a budget of 560 crore, as you mentioned, and this budget, huge budget, was used to make sure that this unique vertical sea lift bridge is being built in a very safe way and in the very perfect way with the help of IIT Chennai and IIT Mumbai. The design has been made in such a way that it can withstand 2 trains at once on the bridge. While the old bridge could only take 15 minutes for the train to pass throughout the entire strait that is there, and also it took the maximum speed that the train could travel was only 10 kilometers per hour. This new bridge will allow the train to pass at 50 kilometers speed in just 3 minutes. So it's a huge development when it comes for Rameswaram, and the tourism is set to increase in the island of Rameswaram with this. Apart from Rameswaram falling, which is the Dhanushkodi, which is also the significant part of India, as it is the last point of the country of India, and it is also said that that is where the Ram Setu bridge was actually built when Rama wanted to go to Lanka to fetch Sita. So here Modi is now just landed in Rameswaram, and in the next few minutes he'll be flagging off the first train that would be connecting Rameswaram to the mainland of India to Chennai, through Chennai, and then it's expected that Modi will be going to the Rameswaram temple, and after taking the blessings of Lord Shiva from there, he
he would also be addressing the public here in Rameswaram. It's expected that Modi would be talking about the 2026 state elections. However, what we also notice is that the state chief minister M.K. Stalin failed to reach Rameswaram as he is in Uti for a public meet, and he also said that he missed this meeting because he wanted to note that the Prime Minister should understand the plight of Tamil Nadu and the issues that the state is facing. He noted that the state has been having issues with the delimitation, NEET, national education policy, and the Waqf amendment bill, and that's the reason he is silently boycotting this particular visit of Narendra Modi to Rameswaram. Well, thank you, Sarda, for those details. We'll keep coming back to you as shortly Prime Minister will inaugurate Pamban Bridge. Thank you, Sarda. Now, viewers, days after Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with top Myanmarese general on the sideline of the BIMSTEC summit, India has again sent more aid to quake-battered country, taking to his ex-handle External Affairs Minister S. Jaishankar informed that an Indian C-17 cargo plane has departed for Mandalay with 31 tons of relief material. Take a look at this report. India has sent more emergency relief to quake-battered Myanmar. In a post on his official X handle, External Affairs Minister S. Jaishankar informed that an Indian cargo plane with emergency relief materials left for Myanmar. The C-17 cargo flight, laden with 31 tons of relief, departed for Mandalay. The fresh consignment of relief for the quake-ravaged country follows bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and top Myanmarese General Aung Hlaing. The two leaders met on the sidelines of the BIMSTEC summit in Bangkok. Prime Minister Modi pledged to stand with Myanmar and continue to support the ongoing relief and restoration efforts in the quake-battered country. Let's shift our focus to the state of Assam, where a nexus of selling newborn was suspected to exist at the Guwahati Medical College and Hospital, and a newborn was allegedly being sold for rupees 2 lakh according to sources. The deal was finalized at the GMCH premises that might have involvement of nurses and other medical staff. Police swung into action and rescued a newborn from the Nalbari district. At least 2 persons have been arrested by the police who were involved in this nexus. Meanwhile, according to sources, this was not the first case of newborn trafficking that has come up. What we are learning is that before as well, there were newborn being sold at GMCH. The authority has not issued any statement regarding the matter. So big breaking news coming in from Guwahati in Assam, where a racket has been exposed and a child has been saved for being trafficked. অকল চাইল্ড লাইন বুলি ক'লে ভুল হ'ব জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় যিটো ডিচিপি ইউনিট বুলি কয় তাত জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কৰবী ডেকা মেডামে বাইদেউৰ তত্ত্বাৱধানত এটি দল এটি বনোৱা সাজা হৈছিলে আৰু তাত স্পেচিয়েলাইজ এডপশ্যন এজেঞ্চি আছিলে আৰু আমি চাইল্ড হেল্পলাইন আছিলোঁ তো বাইদেউ নিজেই লিড লৈছিল টিমটো লিড লৈ যিটো গোপন সূত্ৰৰ মতে আমি তাত হেৰি কৰিছিলোঁ ৰেস্কিউ অভিযানত গৈছিলোঁ আৰু বেলচৰ আৰক্ষী চকীৰ অধীনত যিটো শোলমাৰা আউটপোষ্ট আছে তাত আমি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই বাচ্চাটো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ এইটো আপোনাৰ শোলমাৰা হেলচাৰী এতিয়া 11 দিনমান হ'ব আমি জন্মৰ পিছতে হেৰি কৰিছোঁ মানে এইটো এটা অকল চাইল্ড লাইন বুলি ক'লে ভুল হ'ব জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কাৰ্যালয় যিটো ডিচিপি ইউনিট বুলি কয় তাত জিলা শিশু সুৰক্ষা বিষয়া কৰবী ডেকা মেডামে বাইদেউৰ তত্ত্বাৱধানত এটি দল এটি বনোৱা সাজা হৈছিলে আৰু তাত স্পেচিয়েলাইজ এডপশ্যন এজেঞ্চি আছিলে আৰু আমি চাইল্ড হেল্পলাইন আছিলোঁ তো বাইদেউ নিজেই লিড লৈছিল টিমটো লিড লৈ যিটো গোপন সূত্ৰৰ মতে আমি তাত
হেৰি কৰিছিলোঁ, ৰেস্কিউ অভিযানত গৈছিলোঁ আৰু বেলচৰ আৰক্ষী চকীৰ অধীনত যিটো শ'লমাৰা আউটপোষ্ট আছে তাত আমি তেওঁলোকৰ জৰিয়তে এই বাচ্ছাটো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। এইটো আপোনাৰ শ'লমাৰা হেলচাৰী। Joining me live on this broadcast is my colleague Anirudh. Anirudh, it is a shocking case that has come out of Guwahati Medical College where a racket where newborns were being sold has been busted by the police over there. What more can you tell us on this? Yes, Madhurima, this is a very shocking development that has come to light in Assam. And in fact, we also tried to reach out to the officials of the Guwahati Medical College Hospital. Principal and Chief Superintendent of Guwahati Medical College Hospital, Dr. Setu, has informed us that the incident never took place when the patient, the mother, was admitted at the Guwahati Medical College Hospital, and once they were discharged from the hospital, this entire transaction took place. The Guwahati Medical College Hospital stands firm that there was no such transaction of newborn that took place in the hospital. And as far as the two arrested persons are concerned, they were they approached the parents, the parents who have adopted the child as medical representative in Nalbari itself and not in Guwahati, and they actually facilitate the entire transaction that has happened for an amount of rupees 2 lakh. Meanwhile, the parents who have adopted this child, the newborn, are absconding. Though the police have rescued the baby, the parents who have taken the child into their custody still not been traced. The police has launched a manhunt in order to nab them. However, yes, the interrogation of the two individuals who were directly involved as far as the transaction of the money and the newborn is concerned, they have been nabbed and they are being questioned by the Guwahati police. Madhurima. Well, thank you, Anirudh, for those details. Now, viewers, let's shift our focus to what's happening in National Capital a day after the Waqf Amendment Bill received assent from President Draupadi Murmu. The All India Shia Personal Law Board has expressed concern over the matter. The board has said that it is a matter of great regret and that they will oppose the bill no matter what. So after the All India Muslim Personal Law Board, now we have the Shia Board as well that is going to oppose the Waqf Amendment Bill and will carry out a protest. Listen in. देखिए, प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, ये किसी का भी संवैधानिक अधिकार है. कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. एक तो ये है कि पीसफुली होना चाहिए. दूसरे ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल को सही से पढ़ा नहीं है. अगर ये बिल को सही से पढ़ लेते तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती. सवाल ये है कि जितने मेंबर्स हैं पर्सनल बोर्ड के, आम तौर से सबके पास वक्फ बोर्ड की जगह है. असदुद्दीन अवैसी के पास हज़ार गज जगह है. बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, उनके पास राजस्थान में हज़ारों गज जगह है बोर्ड की. जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 प्रेसिडेंट हैं. ऑर्गेनाइजेशन एक है, प्रेसिडेंट 2 हैं, और दोनों ने अपने अलग अलग ऑफिस बना रखे हैं ITO जैसी प्राइम लोकेशन पर. एक 2 बीघे लिए बैठा है 2000 गज, एक के पास 1000 गज है. ये सैकड़ों करोड़ रुपए की जगह है जो वक्फ बोर्ड की है, और ये लोग उसका किराया तक नहीं देते. इनको डर ये है कि हमारी जगहों का अब नंबर आ गया है, इसलिए मुसलमानों को सामने करना चाहते हैं सरकार के. मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जिसके लिए ये उकसा रहे हैं, जिसके लिए भड़का रहे हैं, कम से कम उस बिल को पढ़ तो लें. Now, the Bharatiya Janata Party and the Vishwa Hindu Parishad has also responded to these protest call from the All India Muslim Personal Law Board and AIMIM. They have said that it is condemnable how that the All India Muslim Personal Law Board and others are protesting against a bill that is going to help poor Muslims. Listen in.
Joining us live is the International President of VHP, Alok Kumar. Sir, All India Muslim Personal Law Board has declared nationwide protest. How do you look at this against the Waqf bill which is passed? It is a very wrong decision. Not because they do not have a right to protest, they do have a right to protest. But I would accuse them of spreading a blatant misinformation campaign to provoke the Muslim community by misleading them to believe that this bill is against the Muslims. This bill, before becoming an act, has passed through many stages. When it was introduced in the parliament, the opposition suggested that it be referred to the JPC. The JPC went around the country, heard all the views, and then decided its recommendations that were given to the government. The government accepted most of those recommendations, but then it was not bulldozed in the parliament. It was debated in the parliament in one of the longest debates on a bill, which went on past midnight. Everybody was allowed to speak and allowed. Security has been beefed up across the state of West Bengal for processions of Ram Navami to make sure that the law and order remains intact across the state. Stay tuned, we'll bring you more on this after this very short break. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। There will be no global recession. So, firstly, there will be no US recession. There will be no global recession. This talk of recession is completely overblown. People talk of recession partly because of the Smoot-Hawley tariffs of 1930. That was an 80% tariff imposed on almost all countries. One of the biggest sufferers from it was Japan then, and Japan responded with Takahashi Korekiyo, the finance minister at the time, coming up with what are now called Keynesian policies. Be that as it may, there was a depression in 1930 because of the size of the US tariffs imposed then and the retaliation by other countries. Now this time around, आपका भाषण संसद में वक्फ पर सबने सुना, वो तस्वीरें भी देखी जब आपने उस बिल की कॉपी को फाड़ा। गांधीयन तरीका है अपने एहतजाज को, अपने प्रोटेस्ट को दर्ज कराने का, और मेरा मानना ये कि ये जो बिल जो अब कानून बन चुका है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वक्फ को लेकर मुसलमान समुदाय के अंदर से आवाज उठ रही थी। आप हमको ये बताइए कि आप लिमिटेशन एक्ट क्यों अप्लाई कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के ऊपर? ये शाहीन बाग वाली जो सोच है, इसके आप समर्थक हैं कि जगह जगह शाहीन बाग बना देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना प्रोटेस्ट करने का राइट हमको है, तो आपको हमको क्यों इतना तकलीफ होनी चाहिए? जब आप एक आम आदमी के लिए सड़क रोक देते हैं, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट होता है तो किसी के पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए। Viewers, top headlines. All India Muslim Personal Law Board calls for nationwide protests and says will ask minorities across cities in India to oppose the Waqf Amendment Bill. सरकार बनाकर के इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। CA/NRC का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग CA/NRC को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। RJD leader Tejasvi Yadav claims Waqf bill will be
tossed into the dustbin if the party is elected to power in Bihar. West Bengal turns fortress for Ram Navami processions. Security heightened across state. Union Home Minister Amit Shah to visit Jammu and Kashmir later today to take stock of state security framework. Prime Minister Modi to visit Tamil Nadu to inaugurate the Pamban Rail Bridge and a slew of development projects. And MK Stalin boycotts a meeting with PM Modi in Rameswaram. And viewers, let's go back to the top story we're tracking right now. So Ram Navami celebrations get underway across many states. Police and the administration have stepped up security measures to any unrest possible in West Bengal. Now, this as a large number of religious rallies expected to take place throughout the day. Parts of Bengal have witnessed unrest during the religious processions in recent years, prompting the authorities to take preemptive steps this time around to avert any kind of situation. Similar measures are also in place in Sambal as Ram Navami celebrations are underway. So back-to-back updates coming in right now. We have a lot of Navami rallies, Ram Navami rallies which are planned, and to make sure that the situation is calm, security has been heightened. I want to go across to my colleague who's joining us. He is Bhaskar and he's live from Kharagpur. Let's go to Bhaskar first. Bhaskar, security tightened ahead of Ram Navami in West Bengal. 29 IPS officers deployed in sensitive areas. If you could take our viewers through the latest coming in and what are we learning of? Because the entire focus right now would be to remain, make sure that the entire situation is under control. बिल्कुल देखिए शिवांगी 29 आईपीएस ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है सिर्फ कलकत्ता के अंदर। देखिए शिवांगी, जिस तरह से ममता बनर्जी के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन अभी कुछ देर पहले भी बोल रहे थे कि रामनवमी के जो जुलूस है, जो प्रोसेशन है, उस प्रोसेशन में स्पेसिफिक गाइडलाइंस मान के चलना पड़ेगा। और उसी जगह से सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्यों रामनवमी के प्रोसेशंस के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं ममता बनर्जी के पुलिस। देखिए सिर्फ कलकत्ता के अंदर 29 आईपीएस ऑफिसर्स को डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ सारे के सारे पुलिस फोर्स जो है वो फोर्स भी डिप्लॉय किया गया है। ड्रोन यूज हो रहा है सर्वेलेंस के लिए। ऊपर से जो हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां से भी सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग हो रहा है। और देखिए पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर जहां पे भी रामनवमी का जो प्रोसेशन है वो प्रोसेशन लेके ऑर्गेनाइजर्स बाहर निकल रहे, उन लोगों का बस सिर्फ एक ही बात कहना है कि जिस तरह से सबसे पहले पुलिस ने रोक लगाने की कोशिश की रामनवमी के जो प्रोसेशंस के ऊपर, वो गलत था। बहुत सारी जगहों पे ऑर्गेनाइजर्स को हाई कोर्ट दौड़ना पड़ा सिर्फ रामनवमी ऑर्गेनाइज करने के लिए, परमिशंस के लिए, क्योंकि उसके पहले ममता बनर्जी की पुलिस ने काफी सारी जगहों पे परमिशन देने से वो मना कर दिए। और उन लोगों को ये कहना था कि रामनवमी की जो प्रोसेशन है वो प्रोसेशन लेके बाहर नहीं आ पाएंगे सब लोग। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद काफी सारी जगहों पे रामनवमी की प्रोसेशंस हो रहे हैं। और अभी देखिए इस वक्त जो हालत है, एक तरफ ईस्ट मिदनापुर पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ खड़गपुर और मिदनापुर टाउन, ये दोनों जगह पे भी वरिष्ठ भाजपा नेता दिलीप घोष वो भी रामनवमी के जो प्रोसेशन है उस प्रोसेशन में भाग लिए। कलकत्ता के अंदर हावड़ा में सुकांत मजुमदार केंद्रीय शिक्षा प्रतिमंत्री वो भी रामनवमी के जो प्रोसेशन है वो प्रोसेशन में ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर रामनवमी के प्रोसेशन चल रहा है। लेकिन एक चीज है जो सब बोल रहे हैं कि अगर रामनवमी के प्रोसेशन के ऊपर किसी तरह की कोई अटैक हो, वो पुलिस की तरफ से हो या फिर दूसरा कोई जगह से अटैक हो, तो फिर उसका खिलाफ
किया जाएगा, उसके खिलाफ जो भी करने की जरूरत है, जिस भाषा में जवाब देना जरूरी ये लोग समझेंगे, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा, ऐसा कहना है सारे ऑर्गेनाइजर्स का। और देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में अंदर कम से कम 2000 से 2500 रामनवमी की जो रैली, वो रैली निकलने वाली है दिन भर। और अभी भी काफी सारी जगहों पर रैली निकलना बाकी है, लेकिन सारे जगहों पे रामनवमी की जो प्रोसेशन है, वो जो सेलिब्रेशन है, वो सेलिब्रेशन अभी चल रहा है। Over to you, Shivangi. All right, thank you for getting those details. I'll be coming back to you as Ram Navami celebrations and rallies are planned for today, and security has been tightened in Bengal, especially to make sure that any untoward incident does not occur. Okay, let's. In fact, we're getting some more reactions coming in. पर भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि जिस तरह से रामनवमी को लेकर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और फिर आपने मानने वाला जी हिंदू अपना धर्म पालन करेगा, इसमें क्या जी सनातन धर्म जी शांत धर्म। आपने अयोध्या का जिक्र किया, एक है तो सेफर का भी जिक्र किया आज एक है तो सेफ का भी जिक्र किया, अयोध्या का भी। All right, let's move ahead to some of the other stories we're tracking right now. After Mamata Banerjee, RJD leader and former Bihar Deputy CM Tejasvi Yadav promised that the Waqf amendment bill will be tossed into the dustbin if his party formed a government in Bihar. He said that his party has moved the Supreme Court against a controversial legislation which passed in the parliament earlier this week. Let's have a listen into what Tejasvi Yadav had to say. Property also, it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे, सब लोगों ने पास करके भेजा था। Meanwhile, the BJP has taken a jibe on Tejasvi Yadav over his comment on Waqf bill. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एंटाइटल डायनेस भड़काने की, बहकाने की और चिल्लाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं और एआईएमपीएलबी को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मैं वक्फ का बिल सरकार आने पर कूड़ेदान में डाल दूंगा। कभी बिल को फाड़ देना, ऑर्डिनेंस को फाड़ देना, कभी कूड़ेदान में डालने की बात करना, ये बताता है कि इनके मन में संविधान नहीं, केवल वोट बैंक की दुकान चलती है। राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए, अब माइनॉरिटीज पर हमला किया जाएगा, पहले मुस्लिम थे, अब क्रिश्चियन पर हमला किया जाएगा। राहुल गांधी जी, तब आप क्यों चुप रहे जब केसीबीसी और सीबीसीआई ने कहा कि वो चाहता है वक्त संशोधन हो। President Draupadi Murmu has given her assent to the Waqf Amendment Bill 2025 days after the Parliament passed the contentious legislation following the heated debates in both the houses. Meanwhile, the All India Muslim Personal Law Board has announced nationwide protest against the Waqf Amendment Bill. Here's a report. Take a look. पक्ष में 288, विपक्ष में 232, बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। Ayes 128. After Parliament passed the Waqf Amendment Bill in both the houses, the bill is passed. The bill has now officially come to force after President gave her nod to the Waqf Amendment Bill. Meanwhile, the All India Muslim Personal Law Board has announced a nationwide protest over the bill. The Muslim Board has called the bill as a severe assault on Islamic values, religion and religious freedom. पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। AIMPLB has now stated that it will lead a nationwide movement against these amendments in coordination with all religious organizations. Soon after the AIMPLB announced the protest, AIMIM also extended its support to the Muslim Personal Law Board.
Meanwhile, the BJP condemned fear-mongering over Waqf Amendment Bill and even stated that AIMPLB does not want poor Muslims, especially women, to benefit. With presidential assent, the Waqf Amendment Bill is now a law. As protests begin and political responses unfold, all eyes are on how the new provisions will be implemented across the country. And viewers, Prime Minister Modi is set to inaugurate the new Pamban rail bridge today, and we're counting down to that. Also known as the country's first vertical lift sea bridge. Now, the Pamban Bridge connects Rameswaram to the mainland. India's new Pamban Bridge has been built at a cost of over rupees 700 crores. Constructed with stainless steel reinforcement, high-grade protective paint, fully welded joints, the bridge boasts increased durability and reduced maintenance needs. Very important update we're getting for our viewers right now. And I want to go to Sharada, who has been on the ground, and she's there to get us a first look of that big inauguration which will be taking place. Sharada, yes, PM Modi inaugurating the new Pamban Bridge. And just not that, there's much more that he has on his itinerary, including the public address later on in the day. Yes, Sharada, take our viewers through latest coming in. But Narendra Modi just landed in Rameswaram, and he's right now on his way to the Pamban Bridge in his car. He's also meeting the public on his way and has been waving his hands to them. So we can see the rejoice in their face as they meet Prime Minister Narendra Modi. Following the inauguration of the Pamban Bridge and flying off the first train from Rameswaram that would be connecting to the mainland of India to Chennai, Narendra Modi would be going to the Rameswaram temple where he'd be seeking blessings from Lord Shiva. This is the third time that Narendra Modi is coming to Rameswaram after he took position in 2024, and following which we also have him addressing the public gathered here in Rameswaram. He'd also be meeting the BJP cadres who have been coming across from the state to meet Prime Minister Modi and listen to his speech. It's expected that Narendra Modi would give us a hint on what's happening in the 2026 elections, following which he'll also be going across the entire city of Rameswaram to check. Because right now, following his visit to Sri Lanka, Narendra Modi is expected that 14 fishermen who were arrested by the Sri Lankan Navy would be released as a sign, and then it's expected that they would be returning soon to Rameswaram. So you can see that a major issue has been addressed for the Rameswaram fishermen. So we can expect more coming in through the day, and following which Narendra Modi will be going back to Delhi. However, it's expected that the Rameswaram fishermen will be meeting Prime Minister Narendra Modi in the public meet and would be asking for more help from the Indian government to help their fishermen before they get arrested by the Sri Lankan Navy when they go out for fishing. Right. And, we have come to know that MK Stalin would be boycotting the meeting with PM Modi in Rameswaram, and he has alternate plans. Especially Uti figures in his plans for today. Was he there to receive the Prime Minister as he landed in Rameswaram? Is he going to be part of any meeting, or he's skipping all the meetings with the Prime Minister? Well, Stalin is in a public party meet in Uti at the moment. He did not come to Rameswaram to receive Prime Minister Narendra Modi. Speaking at the public meet there in Uti, MK Stalin said that he especially missed this particular meeting because he wanted Modi to understand the plight of Tamil Nadu and the issues that the state has been facing. And he also noted that he wanted Narendra Modi to know about the delimitation, the national education policy, the NEET, and the Waqf Amendment Bill the DMK stands against for, and that he also added that that's the reason he's boycotting the meeting. However, he also added that his minister Tangam Tenors, the finance minister of the state, would be receiving Prime Minister Narendra Modi. Also, there was R.N. Ravi, the governor of the state, the current president of BJP, K. Annamalai, and Tamilisai Soundarajan along there. Also, we have to note there's one of the candidates who would be elected as the next BJP president. The names that were running in the forefront was Karpu Muruganandam, who was also there with Annamalai, who and invited him to Rameswaram. So we can expect more from that. And however, now Stalin has stated that his boycott was reasons that the delimitation and NEP, and that he wanted Modi to know the reason for it. All right, thank you for getting those details coming in. We will be coming to you, Sharda, because the Prime Minister Modi will be inaugurating very important projects there, and then we'll be going back to our colleague who's on the ground right now. Now, we move ahead because a very important political meeting in Chennai is stirring
speculation ahead of the 2026 election. Now, Finance Minister Sitharaman met with former ADMK leader, and they raised many questions are being raised about this meeting. There has been a lot of speculation already about an ADMK and BJP alliance. Take a look at this report as we highlight the latest coming in. The 2026 elections in Tamil Nadu is the most to look out for because this time the alliance is quite questionable. Following the AIDMK-BJP alliance that broke out in 2023, it's expected that they would once again be back together. However, there's new developments in this particular alliance. After Edapadi K. Palaniswamy met Amit Shah, the BJP state president K. Annamalai also met Amit Shah in Delhi last week, following which the former AIDMK party general secretary Sengotian, who is also said to be in knots with Edapadi K. Palaniswamy, met Nirmala Sitharaman in Delhi. This time it's expected that NDA's alliance with the AIDMK to be broadened, even Nam Tamila Kachi to be taken into NDA. Earlier, we should remember that Annamalai also said that Seeman is a good friend of his, and that which this statement and this meeting with Nirmala Sitharaman speculates the reason of what the alliance in 2026 will be. So coming up, viewers, All India Muslim Personal Law Board calls for nationwide protest, says will ask minorities across cities in India to oppose the Waqf Amendment Bill. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. Welcome back. We will get you more updates coming in. Let's go ahead to some of the other stories we're tracking. Next segment, Bharat in 5 minutes. Let's get started. PM Modi is going to visit Hisar on April 14 to inaugurate the city's airport and lay foundation stone of the terminal, expressing pride over PM's visit. Haryana BJP President Mohanlal Badoli says that the PM keeps state close to his heart. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं। पहले सुबह 9 बजे हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहां से उड़ान शुरू होंगी और अयोध्या की पहली उड़ान हिसार से, और एक टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। वहां एक बड़ा टर्मिनल बनेगा। उसके बाद 11 बजे यमुनानगर में जो पावर प्लांट है उसको अपग्रेड करते हुए 800 मेगावाट का, उसका भी शिलान्यास करके जाएंगे और हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे लोगों को बिजली उपलब्ध रहे, इसके लिए बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। As nation gears up for Ram Navami, Jharkhand's SP Bimal Kumar informed that the security has been beefed up in the city with proper surveillance and barricades. शासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों की बहुत अच्छा व्यवस्था है। और आज देख रहे हैं क्रिकेटिंग का मामला हो या पुलिस बल का हो, सबका अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं। एसपी साहब भी लगातार बैठे हुए थे, एसडीओ साहब थे, डीएसपी साहब, इंस्पेक्टर, सभी लोग आकर अच्छा मेहनत प्रयास कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस त्यौहार को हम लोग मनाएं। ये नहीं कि त्यौहार को हम लोग किसी तरह मना के चल जाएंगे। इस त्यौहार को हम लोग बहुत ढंग से मना रहे हैं। जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन धन्यवाद। इसी प्रकार शाम तक हम लोग अच्छा माहौल में अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने त्यौहार को मनाएंगे। राम जी का आशीर्वाद और बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद जब लेकर हम लोग अपने घर चल जाएंगे। Questioning the conspicuous absence of leader of opposition Lok Sabha Rahul Gandhi and the
Congress MP from Wayanad, Priyanka Gandhi, during the Waqf Amendment Bill debate in Parliament. BRS MLC K. Kavita issued a strong statement condemning the lack of responsibility and seriousness shown by the Congress leadership. When it actually matters, when the issue is on the boil, when the issue of protecting the rights of minorities is there, they are not there in the Parliament, neither they are serious about defending or speaking on the bill. Why did Rahul Gandhi ji not speak on this important bill when he talks about peace, when he talks about Mohabbat Ka Dukaan, and it is the contrary that is happening in this nation today? Why isn't Mr. Rahul Gandhi speaking in the Parliament on this issue? He should have spoken. I mean, very, very disappointed to see that the main leader of the opposition of our nation does not stand up for more than 30 crore people of this nation. It is unfortunate. Himachal Pradesh Congress President Pratibha Singh announced that a statue of the former Himachal Pradesh CM Veerbhadra Singh will be unveiled. On his birth anniversary, she emphasized that the purpose of building in the statue was to do welfare work, and it was not the demand of the family but of the people of Himachal Pradesh. Union Minister of State for Railways and Food Processing Ravneet Singh Bittu has fervently appealed to senior farmer leader Jagdeep Singh Dhaliwal to end his fast and joint talks with the government on farmer demands. He said that he was making an appeal on behalf of the central government and the people of Punjab to end the hunger strike and come forward for discussions with the central government. Five construction workers are trapped under the debris after a canteen collapsed in the Jagdishpura police station area of Agra earlier today. According to sources, construction was ongoing at the canteen when the tragedy happened. The police said that 4 workers have already been rescued and further rescue operations are ongoing to locate the lone trapped worker. And Defence Minister Rajnath Singh commended the country's Navy for always emerging as a first responder in times of any unfortunate disaster or trouble in the entire Indian Ocean region. Further highlighted that the Indian Navy remains committed towards securing field navigation, rules-based order, anti-piracy and peace and stability in the region. हमारी नेवी इंडियन ओशन रीजन में यह इंश्योर करती है कि कोई राष्ट्र अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमी और मिलिट्री पावर के दम पर किसी दूसरे राष्ट्र को दबा न सके। भारत यह इंश्योर करता है कि इंडियन ओशन में किसी भी सॉवरेंटी पर आज आए बिना उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। All right, getting you back to what is coming in right now. This is a video that the Prime Minister has shared, an aerial view of the Ram Setu. Very important day today. Remember that it is Ram Navami. PM Modi shares a video of aerial view of Ram Setu, or the auspicious occasion of Ram Navami. Ram Navami, being a very, very significant Hindu festival, is being celebrated with fervor across the country, and it is celebrated to commemorate the birth of Lord Ram. Ram Navami is a joyous occasion for devotees, and Prime Minister Modi is sharing a aerial view of Ram Setu. All right, so that is the picture that is coming in of an aerial view of the Ram Setu, and very significant picture coming in. Ram Setu, remember, is mentioned in the epic Ramayana as a bridge constructed by Lord Ram and the Vanar army, and the bridge was constructed to cross over to Lanka, rescue Sita from the clutches of Ravana. So pictures coming in right now of the aerial view of Ram Setu on the occasion of Ram Navami, and this festival is anyways marked by elaborate processions, recitations of the Ramayana, and worship services in temples. I want to go straight across to my colleague, Senior Executive Editor Abhishek Kapoor. Abhishek, very, very important pictures coming in, and this is that Ram Setu bridge
very prominent in the Ramayana and being shared on the day of Ram Navami. Yes, Abhishek. Well, yes, for sure, a part of the Ram Setu, the Pamban Bridge, which the Prime Minister is inaugurating, India's first vertical lift bridge. We have been talking about it. This has been in the making for a couple of years and facilitates the movement of trains, at the same time movement of ships. As can be seen in the pictures, it can be lifted vertically, so let the ships pass by and naval vessels pass by, and also facilitates a quicker movement of people to the Rameswaram island and to the temples there. The Prime Minister himself would be visiting one of the temples and paying his respects. Incidentally, he was there at the same temple in 2024 before the Pran Pratishtha of the Ram temple. He has just posted a picture or video of him traveling from Anuradhapura in Colombo to Rameswaram. He traveled by a chopper and not his plane. And because that's convenient, it's just about 20 minutes of ride or 30 minutes of ride. And in that video, he's seen as observing the entire Ram Setu in the waters below. And this is roughly the same time that for the Ram Navmi festivities in Ayodhya, the Surya Tilak was happening, which is a special arrangement that has been made by the Ram Temple Committee, by which on the Ram Navmi day, specifically just on Ram Navmi day at 12 noon, there is sun god Tilak, so to say, that beam of sun rays coming in on the forehead of Lord Ram's idol in the sanctum sanctorum of Ram Temple in Ayodhya. So at that very auspicious moment, Prime Minister was witness to this Ram Setu. So for him, an auspicious twinning of those two moments and occasions. And the Prime Minister, of course, also inaugurating many development projects in Tamil Nadu, including the Pamban Bridge of the Indian Railways. It's unfortunate that the Chief Minister of Tamil Nadu is not there. He chose to skip the event and be somewhere else, I believe in Uti. And that's going to be our conversation for later in the day. All right, Abhishek Kapoor, senior executive editor, telling us about these pictures shared by PM Modi. He says on the way from Sri Lanka a short while ago was blessed to have a darshan of the Ram Setu. This is what Prime Minister Modi has written on his social media platform. Taking a short break. Viewers, do not go anywhere. We are live and breaking. Much more coming right up. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े क्या निराला MDH मसाला中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。From Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Afternoon, we are live and breaking. I'm Shivangi Shukla, getting you the latest coming in this Super Sunday. We have a lot lined up for you. We have Modi will be inaugurating the Pamban Bridge very shortly, and he will be also holding a public address. This is one of the top updates we're tracking for our viewers. We go straight to the story in a moment, but as usual, the headlines we're tracking first. Let's get started.
All India Muslim Personal Law Board calls for a nationwide protest, says will ask minorities across cities in India to oppose a Waqf amendment bill. सरकार बनाकर के इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। RJD leader Tejasvi Yadav claims Waqf bill will be tossed into the dustbin if the party is elected to power in Bihar. West Bengal turns fortress for Ram Navami procession, security heightened across the state. Home Minister Amit Shah to visit Jammu and Kashmir later today to take stock of state security framework. And Prime Minister Modi in Tamil Nadu will inaugurate the Pamban Rail Bridge and a slew of development projects later in the day. And MK Stalin boycotts a meeting with PM Modi in Rameswaram. And Prime Minister Modi has landed in Tamil Nadu, set to inaugurate the slew of development projects. The Prime Minister will be inaugurating the Pamban Bridge in Rameswaram. He's also shared a video which you will soon see on your screen. And this is a video of the Prime Minister where you can see that he has shared of him there on his way back from Sri Lanka, and he has shared a video of the Ram Setu bridge, and he has said that I'm very, very honored to have a darshan of this Ram Setu bridge on the occasion of Ram Navami. And he says that on the way back from Sri Lanka a short while ago, I was blessed to have a darshan of the Ram Setu. And as a divine coincidence, it happened at the same time as a Surya Tilak was taking place in Ayodhya. Blessed to have the darshan of both. Prabhu Sri Ram is uniting force for all of us. May his blessings always remain upon us. So, Prime Minister sharing that video just a moment ahead of Prime Minister Modi inaugurating the very, very important, iconic, newly constructed Pamban Bridge, which will take place in a short while from now. This is very important given the fact that this bridge will replace a 110-year-old structure that once connected Rameswaram to the Indian mainland. The Pamban Bridge is India's first sea bridge. It was an engineering marvel. Standing around 12.5 meters above the sea level, is stretched in a huge, huge zone. And as we are counting down to those pictures, Prime Minister Modi has already arrived to inaugurate the Pamban Rail Bridge. Several Tamil Nadu ministers were also there present to receive him, but not MK Stalin. I want to go back to my colleague Sharada, who's right there on the ground, and she's getting us back-to-back updates. Yes, Sharada, how much more time is left for us? We're counting down to the inauguration, the iconic Pamban Bridge. How much more time is left for that? Yes, go ahead, Sharada. Prime Minister Narendra Modi has reached Rameswaram, and I think as we speak, he is flying off the first train that would be connecting Rameswaram to the mainland of India to Chennai. We also can see that the bridge is in process, where the unique lift bridge has been lifted, and that the Indian Navy is crossing through it. The coastal borders are opened for them to show Prime Minister Narendra Modi. The place is also gearing up as Narendra Modi is set to pass through these roads to reach the temple. After flagging off the train, Narendra Modi would be visiting the temple, and following which he'll be also meeting the public here in Rameswaram. We can see the first of the vehicles that would be crossing us in the next few minutes, and we can also say that Narendra Modi would be laying the foundation stones of many key projects for the state of Tamil Nadu. However, the Chief Minister of the state, MK Stalin, has boycotted this particular meeting with Prime Minister Narendra Modi. Speaking at a public meet in Ooty just a few minutes back, MK Stalin stated that he is boycotting the special meet because he wants Prime Minister Narendra Modi to understand the plight of Tamil Nadu if he undergoes with the delimitation, third language policy, the NEET, and also the Waqf Amendment Bill. However, the DMK leader, Tangam Tenaris, who was also the finance minister of the state, welcomed Prime Minister Narendra Modi today in Rameswaram, and following which Governor R.N. Ravi was also joined with him. So we can expect that in the public meet we would have a more
knowledge on what the key aspects the state would be receiving for Rameswaram, especially in Tamil Nadu. Right. You know, and a lot of speculation as well about why MK Stalin was not there to receive PM Modi, or even he will not be holding a meeting with the Prime Minister. If you could take our viewers through what is keeping MK Stalin busy. Well, MK Stalin just made a statement at the public meet in Uti that he was busy, he already had his public meet in Uti planned. With the elections coming in 2026, all the parties have started their public campaign, and MK Stalin noted that he has already planned his commitment to meet the Uti and the Nilgiris people, and that's the reason he missed Rameswaram. But speaking at the meet, he mentioned that he not really on purpose boycotted the meet, but had reasons for it, and the reasons that he pointed out was to the delimitation. His lines were that the Tamil Nadu only has 39 seats and 40 including Pondicherry, and however if delimitation happens in 2026, Tamil Nadu will lose the number of seats, and that he was worried about the voices of the southern states going down in Lok Sabha, and that he wanted Prime Minister Narendra Modi to focus on those particular issues now, and following which there were many resolutions passed in the Tamil Nadu State Assembly in the past few days. What we can take is the Waqf Amendment Bill, and the most important one is retrieving the Kachatival land. So the land that initially belonged to India was given away in 1976, and the separation was passed, and he wanted Narendra Modi to... We're getting pictures coming in of Prime Minister Modi inaugurating the Pamban Bridge. These are live pictures for our viewers to see. Very beautiful and stunning visuals coming in where Prime Minister Modi has inaugurated India's first ever vertical lift railway sea bridge in Rameswaram, and very, very important. This is coming in as we see that the train connectivity is going to become much, much better. Just take our viewers through the latest coming in. This is the new bridge which will be replacing the old Pamban Bridge. Well, this new Pamban Bridge is about 2.8 kilometers long, and it is made with a budget of 585 crores. So it is the unique vertical uplifting bridge. So when we had the earlier bridge built in 1914, because of the decorration happened in 2022, the rail service to the island of Rameswaram was stopped, as the roadways were the only way to reach the island, which is away from India. ब्रिज आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ रहा है। ये ब्रिज नीचे था अभी, लेकिन अब ये ऊपर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षी बन रहे हैं इस महत्वपूर्ण क्षण के। बिल्कुल। और ये जहाज आप जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज, इसका मतलब कि आने वाले दिनों में कोई भी किसी भी साइज का कोई भी जहाज हो, वो आप इस पुल के नीचे से गुजार सकते हैं, और ऊपर ट्रेन, नीचे पानी का जहाज। तो ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत इंजीनियरिंग भारतीय रेलवे की तरफ से इस तरह का पुल बनाया गया, जिसे हम वर्टिकली लिफ्ट सी ब्रिज कह रहे हैं, और इसे कहा गया था कि इसे 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है। प्रधानमंत्री इस बहुत ही महत्वपूर्ण पल का साक्षी बनते हुए वहां पे जो तमाम लोग हैं वो उनका आदर सत्कार करते हुए, और प्रधानमंत्री इन तमाम चीजों को देखते हुए, बारीकी से समझते हुए किस तरह से इस पुल का निर्माण किया गया। प्रधानमंत्री ने अब से कुछ देर पहले ही इस पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये ट्रेन मुख्य भूमि से जोड़ता है रामेश्वरम और तमिलनाडु को, और दूसरी तरफ उसके ठीक बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का वो जहाज जो कि इस वर्टिकली सी लिफ्ट ब्रिज के नीचे से भी गुजरा। इन दोनों ही दृश्यों को आपने देखा कि एक तरफ रेलवे यातायात और दूसरी तरफ जो पानी का जहाज है वो। आप देख सकते हैं कि अरब सागर के नीले विस्तार का अद्भुत दृश्य पेश कर रही हैं। ये रेल यात्राएं बहुत लोगों को पसंद भी आती हैं, और यहाँ पर खाड़ी पर भारत का बना हुआ सबसे लंबा पुल माना जाता है ये। वैसे 1988 तक अगर हम बात करें तो रामेश्वरम और मुख्य भूमि के बीच एकमात्र संपर्क होता था पुराना पंबन रेल पुल, और उसके बाद अब अगर हम देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद, लेकिन चक्रवात के बाद ही पुल का नवीनीकरण की एक महत्वपूर्ण पहल जो 2019 में शुरू की गई, और अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है और इससे उम्मीद है कि अब हर साल रामेश्वरम और धनुषकोटी की तीर्थ यात्राओं में भी बहुत भारी इजाफा भक्तों का हो सकता है। और आज रेल परियोजनाओं को किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इस रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये जो पंबन ब्रिज है इसके माध्यम से एक नई तकनीक का पुल जो देश को समर्पित किया गया है, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, लेकिन भक्तों को भी यहाँ पर सुविधा मिलेगी पहुंचने के लिए। आपको लगता है प्रोफेसर तिवारी साहब कि ये दृश्य देखने के बाद लोगों में भी उत्सुकता होगी कि यहाँ पहुंचना चाहिए? रोमांचकारी दृश्य है जिसको आप आध्यात्मिक की एक प्रकार से चमत्कार भी कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये चाहे भक्त हो, चाहे पर्यटक हो, चाहे वो धार्मिक हो या आर्थिक रूप से वहां पर यात्रा करना चाह रहे हो, उनके लिए जो सुगमता है, पहले जो कम से कम पिछले 4-5 वर्षों से 3-4 वर्षों से जो ये रेल यात्रा बंद हो गई थी, तो जो सड़क मार्ग है उस पर कितना दबाव रहा होगा, इसलिए यात्रा में भी असुविधा हुई होगी। और आज के बाद मुझे लगता है कि रेल के माध्यम से तो यात्रा और भी सुगम हो जाती है। और दूसरी बात जो आपने कही कि कितना सुंदर दृश्य है, ये जो दो सागर एक तरह से मिलते हैं और उनका जो दृश्य है मिलन का, तो भारत में यदि देखा जाए तो जगह जगह संगम है, चाहे वो तमिल संगमम काशी में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो या किसी और क्षेत्र में हो या अयोध्या में हो, तो ये जो संगम है, ये संगम किसी न किसी रूप में मुझे ऐसा लगता है कि आर्थिक प्रगति की ओर संकेत करता है। जितना भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी आवागमन होता है, जो भी आवागमन होता है, तो उसमें कुछ आदान प्रदान होता है। और जी जो आप कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, आज का दिन रेलवे के लिए और रेलवे के इंजीनियर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री खुद वहां पे मौजूद है, उन्होंने उद्घाटन किया। हमारे साथ फॉर्मर चेयरमैन जया जी इस वक्त मौजूद हैं। जया जी, एक बार फिर से आपको और रेलवे को बहुत बहुत बधाई कि इस तरह का इंजीनियरिंग मार्बल आप लोगों ने हमारे सामने पेश किया और इन दृश्यों के जरिए जो लोग इस वक्त देख पा रहे होंगे उनके मन में भी एक आशा जगी होगी कि क्यों ना हम भी कुछ दिनों के बाद इस पुल पे जाएं, इस मार्ग पे यात्रा करें, रामेश्वरम जाएं। तो आप लोगों ने एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल करके दिखाया है इस पुल को बनाकर। All right, let's go back to my colleague who's joining us, Sharadha. Sharadha, yes, take our viewers through these pictures coming in right now, and these pictures are showing us how important this new bridge is. Go ahead, and also take our viewers through the rest of the itinerary of the Prime Minister. He will be addressing a public gathering soon. Well, Prime Minister just flagged off the first train that connects Rameshwaram to the mainland of India. So the Pamban Bridge connects the specific island Rameshwaram where the temple of Lord Shiva is built, and the 2.8 kilometer long bridge is built with a budget of 585 crores, as you mentioned earlier. So this bridge is said to have the trains pass much faster with at least a 50 kilometer speed per hour, and the entire bridge distance will only take for the train to just 3 minutes to pass the entire bridge. However, the earlier bridge where it had to open perpendicularly, it took at least half an hour for the bridge to be cross the entire river. So following this flagging of event, Prime Minister Narendra Modi would just be crossing us and would be visiting the Rameshwaram temple, and following the visit to his temple, he's expected to meet the public here in Rameshwaram, where he'll be talking about the ongoing issues in Tamil Nadu, also be referring to the Rameshwaram fishermen community who in Sri Lanka were released today. So out of the 14 fishermen were arrested in Sri Lanka, when he went to Sri Lanka, Prime Minister Narendra Modi yesterday spoke to them, and it's expected that the Rameshwaram fishermen will soon be released, and the boats that were seized will also be given back to the Indian government. Also, there's many key projects for the state and the nation, and Prime Minister Narendra Modi would be laying the foundation stones for all those particular projects from Rameshwaram today, and following which he'll also be traveling to Madurai to catch his flight to Delhi after. And it's expected that around 2:30 all the events in Rameshwaram would be coming to an end. That's right. Those pictures coming in from Rameshwaram, and this is coming in as Prime Minister Modi inaugurating the new Pamban Bridge, a flag of some very key projects very soon. And this is a significant milestone in India's infrastructure development. The state-of-the-art vertical lift sea bridge connects Rameshwaram Island to the mainland, enhancing regional connectivity and boosting tourism.
The event follows Prime Minister Modi's successful 3-day visit to Sri Lanka, where he focused on strengthening bilateral ties. So we have those pictures coming in for you, and why this is important. It's a bridge spanning around 2.5 kilometers in length. And it is also very important given the fact the vertical lift process happens in just 5 minutes. The Pamban Rail Bridge is being inaugurated by the Prime Minister, India's first vertical lift sea bridge, and it allows smooth ship and train movement, making this extremely, extremely important. It will revolutionize rail connectivity in the region while allowing seamless passage for ships. Landmark project will be unveiled on the auspicious occasion of Ram Navami. You can see those pictures coming in. And this adds to the cultural and historical significance. It's also equipped with double tracks and electrified trains. This bridge is extremely, extremely important, and it has features which I just spoke about, making this one of an iconic moment as Prime Minister Modi inaugurates a Pamban Rail Bridge. I'm going to go back to my colleague who's joining us once more. Let's go back to my colleague. Sharadha, you know, this is very important coming in that this is India's first vertical lift sea bridge. And not just the bridge, we also see the Prime Minister will be going ahead and inaugurating many projects. So this is the big push to infra in Tamil Nadu. Well, the Pamban Bridge is very important for Rameswaram as it connects to the mainland of India. As we can see the visuals, Narendra Modi has already flagged off the Pamban Bridge and he's now traveling to the Rameswaram temple. We can see the visuals of his convoys, around 30 cars with ambulance, fire engine and multiple police officials along with the SDG, the district collectorate, have all been passing through us. So following his visit to the temple, Narendra Modi would be meeting the public in Rameswaram. We can see the direct visuals from Rameswaram. After flagging off the Pamban Bridge here, Modi is traveling to the temple. So this particular Pamban Bridge is seen as a very important mode of transport to the island of Rameswaram as it connects the mainland of India. So all these days, back in 2022 when the decorrosion happened to the 1914 old bridge, which was almost used for 100 years, this particular bridge after 2022 stopped the transport through railways to the land of Rameswaram, and it was the only mode of transport was through the roadways. And now we can have this new particular vertical lift bridge that will allow the trains through pass easily, and also multiple ships can pass through. Earlier where only the height of 50 meters was allowed for the ships to pass through, now 73-meter long ship can pass through these new bridges very easily. And we can say that this Pamban Bridge, new built Pamban Bridge vertical lift, would bring in a lot of more tourism to the land of Rameswaram. Right, Sharadha's getting those pictures coming in, and Rameswaram is not just a town. It's very important given the fact it's a place woven into India's mythological fabric. The Ramayana describes Lord Ram beginning the Ram Setu construction from nearby areas, building a bridge to Lanka. And Prime Minister Modi also shared that video of the Ram Setu while he was on his way back to Tamil Nadu. I want to go back to you, Sharadha. Explain to us those pictures which are coming in right now for our viewers. Well, so Prime Minister Narendra Modi, after landing in Rameswaram at 11 a.m., flagged off the particular Pamban Bridge that we said and the train that connects both the island of Rameswaram and Tamil Nadu. So the pictures that we can see we can see him having opened the new the vertical lift bridge, the unique lift bridge first in India, and the bridge was built with a budget of rupees 585 crores. This particular bridge runs up to 2.8 kilometers, and as I mentioned earlier, it connects the island of Rameswaram. And on this special day being Ram Navami, Prime Minister Narendra Modi has already inaugurated the bridge and is now traveling to the temple to worship the Lord deity there, and following which he'll also expected to address the public gathered here in Rameswaram. So the itinerary for Prime Minister Narendra Modi looks very busy in Rameswaram today, and following this we'll also be having
him speaking to the BJP cadres in the state. So with the upcoming elections in 2026, there is also a lot of questions about the alliance in the state of Tamil Nadu, and there's also a change in the state president. So we can expect that Narendra Modi might be hinting at what is to be coming up for Tamil Nadu very soon. That's right. He's flagging off the new bridge, and train services to Rameswaram will now resume. Very important because pilgrimage routes such as Rameswaram Tirupati Weekly Express and Rameswaram Tri-Weekly Express will be reinstated, and it will also benefit 2.5 million devotees annually who visit the Ramanatha Swami temple. Speaking of the Ramanatha Swami temple, yes, Sharatha, that's where he's heading to next now. What is his agenda? He will be doing a darshan and a puja at the temple. Yes, if you get... Yes, he was just passing, the entire convoy was just passing through us. He's now directly going to the temple, so it's expected that his visit in the temple would last for 40 minutes. Being a Ram Navmi, Prime Minister Narendra Modi is visiting the Ramanathan, the main temple of Rameswaram here. So it is not the first time that Modi is coming to this temple. Earlier, in 2024, before opening of the Ayodhya Rama temple, he had come here to take the holy waters from the 23 wells, following which he also visited twice just to get to the temple. So we can say that it is the most important temple that Modi has been coming back to once and again. Back to the studio. All right, we're getting some more breaking updates coming in. MK Stalin has skipped the official protocol, like we had told our viewers earlier, as he did not go to receive Prime Minister Modi upon his landing in Rameswaram, and he's also skipping the meeting with PM Modi. We had told this to our viewers earlier. The Tamil Nadu CM is breaking the official protocol. He did not receive PM Modi. Neither is he going to take part in any of the meetings. In fact, he's busy in Ooty, and Sharatha had told us earlier about the statement that MK Stalin had given on this. Sharatha, if you're there, I just want to come back to you, and if you could take our viewers through once again where MK Stalin is and why did he skip the official protocol to receive Prime Minister Modi upon his landing in Rameswaram? All right, being joined right now by Vinod P. Selvam, BJP Tamil Nadu leader, joining us on the phone line. We'll first go to our guest on the phone line. Thank you for joining us, Vinod P. Selvam. I was also talking to our reporter on this, that MK Stalin is busy in Ooty. He has skipped the official protocol of receiving Prime Minister Modi. Is there any reason for this, that he has taken this step? What is your first reaction? It is rather unfortunate. It is again yet another, it is signaling the fact that the state government does not want to cooperate or be a part of any developmental projects the center under Shri Narendra Modi wants to promise the people and the land of Tamil Nadu. Today, the opening of this new bridge, the Pamban Bridge connecting the mainland to Rameswaram, it's a historical event. It's a very important event. It's a historical event. And, the whole world is in awe of the marvel, the engineering marvel which is being unveiled today. And doing these petty politics and trying to skip this event, this goes to show the mindset of the DMK, the small mindset of the DMK. Broad-minded thinking is very necessary for overall development of the state and its people. Finding petty reasons to skip the Prime Minister is, it really doesn't matter, if you are going to meet Shri Narendra Modi or not. But then when Narendra Modi is coming as the Prime Minister of the country, it is very important that the CM should have been there and been a part of this wonderful occasion where the bridge is being dedicated to our country. So, it just goes to show how the DMK operates, how the DMK function, and it's very evident that they're not interested in the overall growth of the state of Tamil Nadu. Just one small question before I let you go, Mr. Selvam. You think it has anything to do with what Tamil Nadu has been saying all this while, that they are upset with the BJP-led center over release of funds, among other issues?
Could this be perhaps the reason why M.K. Stalin decided to escape? The issue of release of funds is a completely made-up issue. It is just like how they've been scamming the people of Tamil Nadu with their fake promises. This is a fake narrative that DMK is trying to set, saying that the funds are not being released. The funds are being released perfectly on time. In fact, the amount of funds which is being released to Tamil Nadu for various schemes has only increased ever since Sri Narendra Modi, ever since NDA came to power. And I am willing to debate with any DMK person who's sane, who has actual numbers, to prove that the funds being given to NDA is at least 5 times more than what Tamil Nadu was receiving under the UPA, in which the DMK was also a part of. So this is purely politics. This is purely politics the DMK is trying to do. But they're doing politics with the development of the state. You know, the Prime Minister is not only opening the Pamban Bridge, but he's also dedicating several national highways, improving connectivity, land connectivity also, not just the rail connectivity. Land connectivity also is being enhanced today across the state. So the CM skipping these events, it is just showing the mindset, nothing else. And I don't think you can really attribute any other reason to this other than their petty politics. All right, thank you for joining us, Vinod P. Selvam, BJP Tamil Nadu leader, for giving us a perspective on this developing story. Now we move ahead. A key political meeting in Chennai is stirring speculation ahead of the 2026 elections. Finance Minister Nirmala Sitharaman has met a former ADMK leader, and it's raising many more fresh questions about a possible ADMK-BJP alliance. Take a look at this report for more. The 2026 elections in Tamil Nadu is the most to look out for because this time the alliance is quite questionable. Following the AIADMK-BJP alliance that broke out in 2023, it's expected that they would once again be back together. However, there's new developments in this particular alliance. After Edappadi K. Palaniswamy met Amit Shah, the BJP state president K. Annamalai also met Amit Shah in Delhi last week, following which the former AIADMK party general secretary Sengotian, who is also said to be in knots with Edappadi K. Palaniswamy, met Nirmala Sitharaman in Delhi. Today, in Chennai, Nirmala Sitharaman, who had come to deliver a speech on one nation, one election, has met the multiple political leaders in the state of Tamil Nadu. This time, it's expected that NDA's alliance with the AIADMK to be broadened, even Nam Tamila Kachi to be taken into NDA. This meeting with Nirmala Sitharaman speculates the reason of what the alliance in 2026 will be. On the occasion of Ram Navami, the holy city of Ayodhya in Uttar Pradesh witnessed a divine moment as a ray of sunlight fell directly on the forehead of the Ram Lalla idol, a phenomena known as the Surya Tilak. This event symbolically marks the birth of Lord Ram, with the sunbeam illuminating the deity's forehead, adding a spiritual glow to the celebration. Surya Tilak occurred exactly at 12 noon when a beam of sunlight is precisely directed onto the forehead of the idol of Ram Lalla, following a beautiful tilak. आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। The US is taking on all countries in terms of countries that have bilateral trade surpluses with the US. So the US has deficits with China, Canada, Mexico, India, Korea, Japan. So those are the countries that are being slapped with higher tariffs. And the only country so far that has retaliated is China. The EU, which has been slapped with a tariff of 20%, is negotiating. Despite the rhetoric,
the EU is actually negotiating to reduce its trade barriers to the US. It is Ladies and gentlemen, thank you for staying with Republic TV. You're watching Live and Breaking this Sunday with me, Ayodhya Mitra. And yes, the historic Pamban Bridge has been inaugurated and Prime Minister Modi is in the state of Tamil Nadu and he is set to launch a slew of other development projects. Republic TV is tracking that story very closely for you. But first, the headlines at 1:30. Prime Minister Modi inaugurates iconic Pamban Bridge in Rameswaram, also set to launch key development projects worth over 700 crores. Grand Ram Navami celebrations underway in Ayodhya. Lakhs of devotees gather for Surya Tilak of Ram Lalla. जो भी यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं, पहले उन्हें 22 कुंडों में स्नान करना होता है और 22 कुंडों में स्नान करने का मतलब ये है कि पहले आप खुद को पवित्र करिए और आपको तमाम जो पवित्र नदियाँ हैं, तमाम जो पवित्र उनके नाम से जो कुंड बनाए गए हैं उसमें स्नान करने के बाद, खुद को पवित्र करने के बाद ही आप अंदर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन भर के जो पाप है, आपने जो भी गलतियां की हैं उसकी माफ़ी होती है एक तरीके से और पाप मिट जाते हैं। तो अब फिलहाल जो है बाकी जो श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे वो तो फिलहाल किनारे हो गए हैं क्योंकि उन्होंने स्वागत कर लिया पीएम मोदी का। पीएम मोदी अब अंदर जा चुके हैं और गर्भगृह में पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे। तस्वीरें वहाँ से भी निकल के सामने आएंगी पूजा करते हुए। और जिस तरीके से अगर हम आज पीएम मोदी की बात करें तो जब वो श्रीलंका से आ भी रहे थे रामेश्वरम, तो जिस तरीके से अगर बात करें, वैसे तो श्रीलंका से डिस्टेंस यहाँ का मात्र 20 किलोमीटर का है, लेकिन जब आप हवाई यात्रा करते हैं तो आपको वो भी अद्भुत अनुभव मिलता है जब आप राम सेतु के दर्शन कर पाते हैं। तो पीएम मोदी ने राम सेतु के न सिर्फ दर्शन किए हैं बल्कि वो तस्वीरें शेयर भी की हैं और शेयर करने के साथ साथ ये भी लिखा है कि जहाँ पे एक तरफ सूर्य तिलक हो रहा है प्रभु श्री राम का, तो उन्हें ये मौका मिला है, सौभाग्य मिला है कि जो वो इसी मौके पर, इसी दिन पर अंदर जा सके रामेश्वरम मंदिर में और वहाँ पे पूजा अर्चना कर सकें। तो प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और कुछ देर के बाद जो तस्वीरें हैं निकल के सामने आएंगी अंदर से भी, जब पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे होंगे, रुद्राभिषेक करेंगे और यहाँ पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक मोदी जी रुकेंगे, प्रधानमंत्री मोदी रुकेंगे, इसके बाद निकलेंगे, फिर वो जाएंगे जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट का एक ग्राउंड बनाया गया है उस ग्राउंड पे पीएम मोदी जाकर के जनसभा को संबोधित करेंगे। और माना दरअसल ये भी जा रहा है कि बहुत सारे ऐलान, बहुत सारी बातें पीएम मोदी के संबोधन में भी होंगी। तो बाकी बातें एक तरफ, राजनीति की बातें एक तरफ, तोहफों की बात भी एक तरफ, लेकिन इस समय जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है पीएम मोदी की, वो है भक्ति की, श्रद्धा भक्ति के साथ साथ प्रभु श्री राम के प्रति उनके आस्था की भी, क्योंकि आज राम नवमी का मौका है और राम नवमी के मौके पर जो उत्सव देख रहे हैं हम अयोध्या में, जो उत्सव देख रहे हैं हम कोलकाता से लेकर के झारखंड में, झारखंड से लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में, वो तस्वीरों के साथ साथ जो आज की तस्वीर है ये काफ़ी अहम हो जाती है। ये वो जगह जहां पे प्रभु श्री राम ने शिव जी की आराधना करने के साथ साथ उनके शिवलिंग की स्थापना की थी और अंदर 2 शिवलिंग है जिसमें एक रामलिंगम और एक विश्वलिंग, 2 जो शिवलिंग है वो अंदर विराजमान है जिनकी लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और ऐसी भी मान्यता है यहाँ पे पूजा करने को लेकर के कि 4 जो धाम है उसमें से जो ये धाम है जिसको रामनाथ स्वामी मंदिर हम कहते हैं, इस धाम की विशेषता यह है कि आपके शारीरिक रोग, विकार जो है वो यहाँ पे दर्शन करने मात्र से दूर हो जाते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है दरअसल कि ये जो 22 कुंड बनाए गए हैं वो 22 कुंड भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो जो नाम है 22 कुंडों के वो लक्ष्य। All right, those are the visuals on your screen, viewers, from Rameswaram, specifically from the Ramanath Swami temple. Those are the visuals of Prime Minister Modi at the temple. Earlier, just a short while ago, we got you visuals of Prime Minister inaugurating the iconic Pamban Bridge. And later today, in fact, he's set to launch
a spate of development projects in Tamil Nadu and address a rally. And we understand that he will also flag off a new train service and a ship from a road bridge and witness the operation of the bridge. This is the Prime Minister's mega development push in Tamil Nadu. And speaking about speaking about this Vikas push in Tamil Nadu, it's also important to note, viewers, that Chief Minister M.K. Stalin is missing in action as Prime Minister is in his state. And as we understand that he's occupied in other meetings, and Prime Minister Modi, and we keep getting you the visuals as and when they come in from Tamil Nadu. But for the moment, viewers, we move on. Now, a day after the Waqf Amendment Bill received assent from President Draupadi Murmu, the All India Shia Personal Law Board has expressed concern over the matter. The board has said that it is a matter of great regret and that they will oppose the bill no matter what. The All India Muslim Personal Law Board, in fact, has also said that in every state capital, Muslim leadership will offer symbolic arrests, and at the district level, protests will be organized. At the conclusion of these protests, memorandums will be submitted to the President of India and the Home Minister. Now, amid calls for these protests, there's also a spate of opposition parties who have approached the top court of the country opposing the bill. And joining me on this broadcast is my colleague Piyush, who's live with me from the national capital. Piyush, there's a slew of opposition parties who have decided to approach Supreme Court opposing the Waqf Amendment Bill. And the All India Muslim Personal Law Board is, in a sense, trying to replicate the Shaheen Bagh model in a bid to oppose what they call an anti-minority bill. So, Anna, you mentioned about the Shaheen Bagh model, and while I am speaking to you, I am right now over here at Shaheen Bagh itself, and I would request my video journalist Vijay Yashpal Saini ji to show the visuals just to make sure that there is no repeat of 2019 to 2020 when there were a large number of protesters that had come and congregated over here at Shaheen Bagh. You're witnessing that how there is a heavy deployment or a substantial deployment of Seema Shastra Bal, Delhi Police and Rapid Action Force, so to make sure that there is just no repeat of Shaheen Bagh model which we had witnessed in 2019 to 2020. Having said that, and I will just request my video journalist to continue showing the visuals over here just to make our viewers understand that what exactly is the preparation over here. Having said that, as you rightly mentioned, that backed by All India Majlis-e-Ittihad Muslimin, the All India Muslim Personal Law Board has now stated categorically that since the Waqf bill is being made a law, there is going to be nationwide protests. And not only have they said that there is going to be protest on the streets, they are also going to fight this case legally. And thereby we are witnessing that how in the Supreme Court there have been 6 petitions. And I would repeat over here, there have been 6 petitions that have been filed so far, in which several MLAs, MPs, and also the AIMIM head, that is All India Majlis-e-Ittihad Muslimin head, Asaduddin Owaisi, has filed a petition at Supreme Court in which they have said that they will protest this bill. So yes, you are witnessing that in the coming few days, it is going to be a bit of a challenge for not only our law enforcement agencies to make sure that there is no untoward incident, but also for our government to make sure that they convince everybody to make sure that this bill is now a law. Back in the studio. Yes. All right, Piyush, many thanks for getting us those updates. Viewers also getting in more responses on the matter. Now, the BJP has strongly protested the opposition's call for nationwide agitations, and we're getting in the latest reactions on that. Take a look. देखिए, प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, ये किसी का भी संवैधानिक अधिकार है. कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है. एक तो ये है कि पीसफुली होना चाहिए. दूसरे ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल को सही से पढ़ा नहीं है. अगर ये बिल को सही से पढ़ लेते तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती. सवाल ये है कि जितने मेंबर्स हैं पर्सनल बोर्ड के, आम तौर से सबके पास वक्फ बोर्ड की जगह है. असदुद्दीन अवैसी के पास हज़ार गज जगह है. बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, उनके पास राजस्थान में हज़ारों गज जगह है बोर्ड की.
जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 प्रेसिडेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक है, प्रेसिडेंट 2 हैं, और दोनों ने अपने अलग अलग ऑफिस बना रखे हैं ITO जैसी प्राइम लोकेशन पर। एक 2 बीघे लिए बैठा है 2000 गज, एक के पास 1000 गज है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए की जगह है जो वक्फ बोर्ड की है, और ये लोग उसका किराया तक नहीं देते। इनको डर ये है कि हमारी जगहों का अब नंबर आ गया है, इसलिए मुसलमानों को सामने करना चाहते हैं सरकार के। मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जिसके लिए ये उकसा रहे हैं, जिसके लिए भड़का रहे हैं, कम से कम उस बिल को पढ़ तो लें। All right, viewers, now Waqf JPC Chairman Jagdambika Pal has condemned the street protests against the landmark piece of legislation, saying that it was aimed at bringing a qualitative difference to the lives of Muslim poor. Unsparing in his criticism of the dissenters, the senior BJP leader said that no public utility was raised on Waqf land that were donated for the welfare of the community. Senior BJP MP Jagdambika Pal, who headed the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, condemned the ongoing street protests against the reformist legislation. Coming out in favor of the bill, which was signed into law by President Draupadi Murmu after its passage by both houses of Parliament, the BJP said it marked the culmination of a long struggle. In a scathing takedown of the dissenters and critics of the landmark law, he said not a single public utility was raised on Waqf land that were donated for the welfare of poor Muslims. इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि वक्फ जो करता था, जिसको वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की इंटेंशन होता था कि हम अपनी कमाई का गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, और उसके इनकम से गरीब को, पिछड़ों को, मुसलमान को, महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में या ज़रूरतमंदों को उसकी मदद मिले। लेकिन देश की रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी देश में है, 3rd लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी इन द कंट्री। लेकिन इसके बावजूद भी न कहीं कोई यूनिवर्सिटी था, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था, और उसका फ़ायदा जो केयरटेकर, मुतवल्ली हो गए या वक्फ बोर्ड के अहलकार लोगों को मिलता था। तो ये अपने आप में एक वक्फ के कानून में संशोधन में बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। मुसलमान, पिछड़े, जो पसमानदा गरीब हैं, उनकी स्थिति SC ST से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी। मुस्लिम महिलाएं तो 51.9% इलिटरेट हैं, हायर एजुकेशन में 6.5% है। तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में सुधार आना चाहिए। All right, viewers, now shifting focus to what's happening in West Bengal. Now, posters with slogans of Azadi and Free Kashmir and Free Palestine have resurfaced at the Jadavpur University campus. This merely weeks after a massive showdown on campus over the promotion of urban Naxal elements. Now, the graffiti has reappeared on the university walls, all while Ram Navami celebrations are underway. And those are the visuals on your screen. On the left side, we have Grand Ram Navami celebrations underway in various parts of Bengal, and posters calling for Azad Kashmir and Free Palestine and Free Kashmir movement on the walls of Jadavpur University. Ridhita, my colleague from the Kolkata newsroom, joins me live on this broadcast. Ridhita, this is not the first time that we are seeing this. Merely weeks ago, there was massive protests inside the Jadavpur University campus. Republic Bangla's crew was not spared. And now this is the second time in merely a month that we see this call for separatism on campus. Absolutely, Ayona. As we see, the visuals of the anti-national graffitis are still still prevalent on the walls of Jadavpur University near the Technology Bhavan, which is near the gate number 3. And today, on the occasion of Ram Navami, we see that the celebration of Ram Navami, the puja which is being done, is also in front of the Technology Bhavan, which yesterday, after the call that yes, inside Jadavpur
Jadavpur University, the celebration can be done, which was said that it will be outside gate number 3. But now today we see that the ABPP wing of the Jadavpur University is celebrating it inside the Technology Bhavan, just in front of the Technology Bhavan. And also we see that this anti-national graffiti, for which tussles broke out as Republic Bangla had voiced for removal of this graffiti, tussles broke out, and the students went upon us. There was attacks done on the Republic Bangla crew, and after which today we see as the spacious celebration of Ram Navami is being done inside the campus. National flag is also being hoisted upon the anti-national graffiti which demands for an Azad Kashmir. Back to you, Ayana. Ridhita, stay on with me because I just want to get across to our viewers what you've just mentioned. Now, viewers, the national flag has been raised on the Jadavpur University campus amid Ram Navami celebrations, and while that graffiti of Azad Kashmir and Free Kashmir Palestine is adorning the walls of the Jadavpur University campus. So there it is on your screens, a strong sentiment of nation first, while some are seemingly trying to promote the Tukre narrative at the Jadavpur University campus. Ridhita, tell us more. Absolutely, Ayana. As the authority of Jadavpur University could not do anything but of removing the anti-national graffiti which has been emblemed on their walls for more than a year now, and then after repetitive voices being raised by Republic Bangla and also nationwide protests being laid to remove such anti-national graffiti from the wall of a public university, the authorities did not take up any step. They did not wake up to this call, but today, as the spacious celebration of Ram Lalla is happening throughout India, and also we are seeing worldwide celebration, we also see that anti-national graffiti is now being taken off. The national flag is now being hoisted above it, and the sentiment, as you mentioned, of the nation first sentiment is been established inside the campus of Jadavpur University, which spoke of ultra-Naxalism, which spoke of urban Naxalism inside the campus, and the authorities did not wake up to the call. But I think today is again a wake-up call as we celebrate the auspicious day of Ram Navami. Back to you, Ayana. Right, absolutely, Ridhita. Thank you so much for getting us all those updates. Viewers, those were the visuals on your screen. And now we shift focus to everything else that is making news across the country. This is Bharat in 5 minutes. Prime Minister Modi is set to visit Hisar on April 14 to inaugurate the city's airport and lay the foundation stone of the terminal. Expressing pride over the Prime Minister's visit, Haryana BJP President Mohan Lal Badoli said that the Prime Minister keeps the state close to his heart. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं। पहले सुबह 9 बजे हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहां से उड़ान शुरू होंगी और अयोध्या की पहली उड़ान कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध के दौरान किए गए पापों से मुक्ति के लिए भी प्रभु श्री राम ने यहीं पर भगवान शिव से प्रार्थना की थी। एक तरीके से ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को समर्पित है ये रामनाथ स्वामी मंदिर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के अपने सफल दौरे के बाद राम नवमी के शुभ दिन पर पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर, प्रभु श्री राम को नमन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए, जहां उन्होंने विस्तार से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना भी की है। बिल्कुल, और कुछ जानकारी आपको दे दें इन दृश्यों के जरिए कि रामनाथ स्वामी मंदिर में जो मुख्य देवता हैं वो भगवान रामनाथ स्वामी लिंगम के रूप में विराजमान हैं और मंदिर के गर्भगृह में 2 लिंगम हैं। ये भी आपको जानकारी दे दें कि इस मंदिर का जो गलियारा है, जो कॉरिडोर है, वो दुनिया के किसी भी हिंदू मंदिर में सबसे लंबा माना जाता है इस कॉरिडोर को। और ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर में 22 पवित्र तालाब हैं जहां भक्त स्नान करते हैं, जिनमें अग्नि तीर्थम सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ मंदिर में राम, माता सीता, लक्ष्मण और विभीषण की मूर्तियां भी स्थापित हैं।
भी जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे तब पीएम मोदी ने यहाँ पे रात में विश्राम तक किया था, आराधना की थी, 22 कुंडों में स्नान किया था। उसके बाद पूरे 1 साल के बाद ये तस्वीर निकल के सामने आई है जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं रामनाथ स्वामी मंदिर और तमिलनाडु वासियों को बड़ी सौगात देने के बाद पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके बाद पीएम मोदी गर्भगृह के बाहर मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। इसके पहले हमने देखा कि मुख्य द्वार पर जिस तरीके से जो संत और महंत थे उन्होंने उनकी आगवानी करी, आगवानी करने के बाद उनकी आवभगत करने के साथ ही उन्हें अंदर लेकर के गए और अंदर से जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की, पीएम मोदी जो है भक्ति में डूबे हुए हैं भोलेनाथ के। और हमने इसके पहले भी पीएम मोदी की कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं देश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर पीएम मोदी की भक्ति में डूबी तस्वीरें हमने देखी हैं। लेकिन आज मौका है रामनवमी का और रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर जहां पे प्रभु श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले पीएम मोदी ने श्रीलंका से रामेश्वरम के रास्ते में विमान से ही राम सेतु को भी देखा और अब पहुंचे हैं उस जगह पे जिस जगह पे शिवलिंग की स्थापना साक्षात प्रभु श्री राम ने की थी। माता सीता के हाथों से बनाए हुए रेत के शिवलिंग को भी अंदर रखा गया है, वहाँ पे भी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये आराधना भक्ति और राम भक्ति की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, हम ये दिखा रहे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर के उस प्रांगण से जहाँ पे गर्भगृह पहुँचे हुए प्रधानमंत्री मोदी। और ये लाइव कवरेज लगातार दिखा रहे हैं आपको हम रामनाथ स्वामी मंदिर से जहाँ पर पीएम मोदी तमिलनाडु वासियों को बड़ी सौगात देने के बाद अब पहुँचे हैं रामनाथ स्वामी मंदिर में जहाँ पर पीएम मोदी की ओर से पूजा अर्चना की जा रही है। ये महा कवरेज लगातार जारी है। जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम ये दिखा रहे हैं रामेश्वर से। इसके पहले पीएम मोदी ने सौगात दी तमिलनाडु वासियों को। महा कवरेज दिखाते रहेंगे आपको। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी लगातार कवरेज जारी। हुए इन विभिन्न मंदिरों का दौरा किया था क्योंकि उनका मकसद यही है कि पूरे देश में सांस्कृतिक एकता को कायम किया जाए। ऐसे में दक्षिण के राज्य में जो रामायण में जो वर्णन किए गए हैं, भगवान राम से जुड़े विभिन्न घटनाओं से जुड़े मंदिरों का जो वर्णन किया गया है, उसी के मद्देनजर पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम आंध्र प्रदेश के लापाक्षी में वीरभद्र मंदिर की बात करें, केरल में त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर की बात करें, या फिर तिरुचिरापल्ली में श्रीरंगम में रंगनाथ मंदिर की बात करें, या फिर रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी मंदिर की बात करें, जहां आज पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आस्था को साथ लेकर पहुंचे हैं प्रभु श्री राम के चरणों में नमन करते हुए। और रामनाथ स्वामी मंदिर जो प्रभु श्री राम के पैरों के निशान को ही समर्पित माना जाता है ये मंदिर, क्योंकि श्रीलंका जाने से पहले भी प्रभु श्री राम ने यहाँ रामनाथ स्वामी यानी शिव के लिंगम की स्थापना की थी। तो प्रभु श्री राम प्रभु शिव के संगम का एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है ये रामनाथ स्वामी मंदिर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि सांस्कृतिक एकता के सूत्रधार रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वही धार्मिक आस्था के भी प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसी का एक संगम हमें प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देखने को मिला है। तो आज प्रधानमंत्री ने पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित किया, विभिन्न परियोजनाओं का 8300 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। और उसके बाद वे पहुंचे प्रभु की शरण में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में, ताकि प्रभु श्री राम से आशीर्वाद ले सकें, पूरे देश की समृद्धि के लिए उनसे प्रार्थना कर सकें। और आज के ये दृश्य इसी बात को दिखाते हैं। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रीलंका की सफल यात्रा के बाद भारत आ रहे थे तो उन्होंने राम सेतु के भी दर्शन किए, और वो उसी वक्त हो रहा था जिस वक्त अयोध्या में प्रभु श्री राम का सूर्याभिषेक हो रहा था, उनका सूर्य तिलक हो रहा था। और वो मनभावन लोक लुभावन दृश्य भी हमने आपके समक्ष रखे कि कैसे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम के ललाट को दीप्तिमान कर रही थी, दमक रहा था उनका ललाट। और उसी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम सेतु के दर्शन कर रहे थे, जिसके बाद वे पहुंचे रामेश्वरम, और राम नवमी के शुभ अवसर पर उन्होंने इस ऐतिहासिक मंदिर में पौराणिक कथाओं से जुड़े इस रामनाथ स्वामी मंदिर में अपनी आस्था, अपनी भक्ति प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित की। जगत कल्याण की भावना लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़ें, सबका विकास हो, प्रधानमंत्री की इसी परिकल्पना और इसी सोच को एक बार फिर से इन दृश्यों के जरिए आप समझ सकते हैं। जगत कल्याण की भावना, और जब प्रधानमंत्री कहते हैं, भारत कहता है वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक हैं, हम सभी
कुटुंब हैं एक दूसरे के साथ, और इन्हीं जगत कल्याण की भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री जब किसी भी मंदिर में जाते हैं तो उनकी एक कोशिश रहती है, जो प्रभु से वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, भारत के लोगों के साथ साथ पूरे विश्व का, जगत का कल्याण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ प्रधानमंत्री किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं धार्मिक स्थल पर, तो उनके मन में ये भावना रहती है। और जैसा कि ममता आपने कहा कि पहले विकास का कार्य, और विकास के कार्यों को देश को समर्पित करने के बाद वो प्रभु के शरण में कि हे प्रभु, वो क्षमता, वो अब आशीर्वाद, वो आत्मबल हमें दें कि हम इस भारत भूमि को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकता है वो काम करें। तो इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामानाथ स्वामी मंदिर में भगवान के सामने। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए। प्रोफेसर तिवारी, ये दृश्य आपको क्या एहसास दिखा रहे हैं? मुझे तो यही एहसास, जैसा कि हम पहले चर्चा कर रहे थे असीम जी और आप भी, कि एक सूत्रात्मकता है भारत की। आप कल्पना करिए कि हजारों मील दूर उत्तर भारत में अयोध्या में आज लाखों श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए वहां पहुंचे हुए हैं, वहां पर पूजा अर्चना हो रही है। उसी समय इस भारत के जो कर्णधार हैं, जो उनके एक प्रकार से प्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री उसके बिल्कुल साउथ में, दक्षिण में जाकर के ऐसे स्थान पर पूजा अर्चना कर रहे हैं जहां पर आपने बताया कि भगवान राम श्रीलंका जाने से पहले उन्होंने स्थापना की थी। उन्होंने, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर ढंग से कहा है, करी हूं यहाँ शंभु स्थापना, मैं यहाँ पर शंभु की स्थापना। और उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो शैविज्म और वैष्णविज्म, शिव और राम में जो अंतर बीच में लोग, कुछ विद्वानों ने या कुछ लोगों ने किया, उसको वहां पर तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में ये कहा कि शंकर और राम एक दूसरे के बिल्कुल निकट हैं। उन्होंने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोहि न भावा। यदि कोई कहता है कि वो शिव से द्रोह कहता है मेरा दास है, तो सपने में भी मुझे वो पसंद नहीं है। शंकर द्रोही दास मम द्रोही शिवदास, दोनों बातें कहते हैं कि चाहे वो अपने को राम भक्त कहे और शिव का भक्त नहीं कहे। इस प्रकार से यदि ये जो दक्षिण और उत्तर की जो ये खाई बनाने की बार बार जो प्रयास किया जाता है, वो उस खाई को पूरी तरह से पाटता है ये दृश्य कि ये दक्षिण में बैठ करके भगवान राम के जो प्रभु हैं शिव, और जैसा कि अभी असीम जी ने बताया कि एक तो 4 धाम में से एक है, दूसरे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है, वहां पर बैठ करके उनके प्रभु, राम के प्रभु की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्रा भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं रामेश्वरम से ही। अश्विनी, इन दृश्यों को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं, और क्या सोच, और जैसा कि हमने कहा कि पहले विकास के कार्यों को राष्ट्र को समर्पित। Right on the other side of Live and Breaking, we'll get you more visuals of the Prime Minister's visit to Tamil Nadu. He's also slated to inaugurate key development projects later. Stay tuned to Republic TV. इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग स्टिक भी बन सकती है। There will be no global recession. So, firstly, there will be no US recession, there will be no global recession. This talk of recession is completely overblown. People talk of recession partly because of the Smoot-Hawley tariffs of 1930. That was an 80% tariff imposed on almost all countries. One of the biggest sufferers from it was Japan then. And Japan responded with Takahashi Korekiyo, the finance minister at the time, coming up with what are now called Keynesian policies. शक्ति और साथ ही साथ संकल्प से सिद्धि का उन्होंने कहीं ना कहीं वर मांगा। और जो पूरे दृश्य आप देख रहे हैं वो मंदिर के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वहाँ जिन्हें भगवान स्वामी हनुमान जी हो, चाहे माता विशाला। QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University.
India's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Good afternoon, viewers. This is Republic and you're watching Live and Breaking with me, Madhurima Mishra. Let's get started with the headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates iconic Pamban Bridge in Rameswaram, offers prayers in Ramantaswamy Temple. Grand Ram Navmi celebrations underway in Ayodhya. Lakhs of devotees gather for Surya Tilak of Lalla. Security heightened across West Bengal amid Ram Navmi celebrations. 29 senior IPS officers to monitor arrangements in Kolkata. It is a very wrong decision. Not because they do not have a right to protest, they do have a right to protest. But I would accuse them of spreading a blatant misinformation campaign. Massive showdown over Waqf Amendment Bill. All India Muslim Personal Law Board faces flack over street anarchy call against historic reform. सरकार बनाकर के इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे. RJD leader Tejaswi Yadav claims Waqf will be tossed into the dustbin if the party is elected to power in Bihar. We was ahead of Home Minister Amit Shah's visit. The BSF DG has arrived in Jammu. DG Diljit Singh Chaudhary to visit Kathua international border shortly. Anti-terror operations have been ongoing. प्रकार की भी परिस्थिति है उसका किस प्रकार से विकास की ओर लोगों को सुख हो, लोगों को सुविधाएं मिले, इस प्रकार का जो निरंतर कार्य होता रहता है उस कार्य को जिस प्रकार से ये आगे बढ़ाते हैं लोगों को लगता है उनको लाभ मिलता है और फिर उस सबकी एक लालसा होती है. कैसा व्यक्तित्व है जो मुझे लगता है हम लोगों की स्मृति में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो भारत के किसी भी कोने में, भारत के अतिरिक्त अगर विदेशों में भी जाते हैं, श्रीलंका में आपने देखा होगा कल परसों कितने लोग लाइन लगा रहे थे, किसी भी देश में जाते हैं, हर देश में, थाईलैंड में हो, हर जगह चाहे भारतवंशी हो चाहे वो स्थानीय लोग हों, वो ऐसे व्यक्तित्व को देखना चाहते हैं जो निरंतर अहर्निशि कार्य करता है. और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि आजकल नवरात्र चल रहे हैं, पिछले 9 दिन से प्रधानमंत्री सिर्फ जल पर आधारित है और कितनी ऊर्जा, हर बार उपवास रखते हैं. तो इस प्रकार से ये एक अनेक इनके जो स्वभाव है, जो उनका कृतित्व है, जो उनका व्यक्तित्व है, उसके विषय में लोग जानना चाहते हैं. इसलिए इनका भी दर्शन करना चाहते हैं. ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ऐसा व्यक्तित्व बिरले ही मिलता है जो रातों दिन सिर्फ भारत के विकास के लिए किस रूप में, चाहे वो विदेश में हो या देश में हो, तो लोग इसलिए उत्सुक होते हैं देखने के लिए कि ये कौन सा व्यक्तित्व है, किस माटी के, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर्मयोगी की संज्ञा दी जाती है. किस माटी के बने हुए हैं ये भी तो लोग जानना चाहते हैं. जी बिल्कुल. हमारे साथ शेखर अय्यर जी भी बने हुए हैं. शेखर जी, आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि शब्दों की जरूरत नहीं होती कई बार अपने एहसास साझा करने के लिए. यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनकी उपस्थिति ही इसको दिखाती है कि किस भावनाओं के साथ ये आ रहे हैं अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए. बिल्कुल ममता जी, अगर प्राइम मिनिस्टर की लोकप्रियता के बारे में बात करना है
खास करके तमिलनाडु में जब भी कहीं भी गए, वो श्रीरंगम हो, चेन्नई हो, कोयम्बतूर. Well, Prime Minister Narendra Modi has now flagged off an inauguration of the Pamban Bridge, the first train that would be connecting Rameswaram again back to the mainland of India would be Chennai. And now, after flagging off the particular train, Narendra Modi is now visiting the Rameswaram temple, and following which he'll also be addressing the public in Rameswaram here. Prime Minister Modi would also be meeting the BJP cadres who've come across here from all along the street, and it's also said that Prime Minister Narendra Modi would be addressing the issue of the fishermen. Viewers, breaking news coming in that the DG BSF has reached Jammu and Kashmir ahead of that crucial meeting that will be held by Union Home Minister Amit Shah. DG Daljit Singh Chaudhary is there in Kathua and will also visit the Kathua international border shortly. Anti-terror operations have been ongoing in Kathua for past 15 days, and the DG BSF will hold a security review meeting with the officials at the international border. The BSF chief will review anti-infiltration grid on the border and BSF operation in the hinterland. Joining us live on the broadcast is my colleague Gursimran. Gursimran, all the top officials are reaching Jammu and Kashmir. Now the DG BSF has also reached and will be moving towards the border as well to review the security situation. What more can you tell us? Yes, as we speak, the DG BSF is en route to the Hiranagar international border in the Kathua district of Jammu. This district has witnessed multiple terror-linked incidents after 23rd of March, and it's day 15 of the anti-terror operations that are underway in the area. DG BSF Daljit Singh Chaudhary arrived Jammu today afternoon at around noon, and after that he accompanied by the IG BSF Jammu Frontier Shashank Shekhar Anand and the IG of the BSF VK Thaplial. He went to the forward areas of the Jammu Frontier. But we are being told that he will be reviewing the operational preparedness as well as the anti-infiltration grid that is in place along the Indo-Pakistan border in the Kathua district, and also the operational preparedness in the hinterland, because in the hinterland operations as well, the BSF is playing a vital role. Apart from this, today evening when the Union Home Minister will arrive, before that we are told that the Intelligence Bureau IB Chief Tapan Deka, who also is in Jammu, will be holding a security assessment meeting with the top official, wherein he will also be focusing on the area of Jammu Kathua Samba, where the infiltration is believed to have happened in last couple of years, and also recently there are similar inputs which suggest so. The recent group of Jaish that the 3 members of which are still alive and 2 have been neutralized is believed to have sneaked over from this very area, though whether it is via ground infiltration or tunnel, it is being ascertained by the relevant agencies. But yes, ahead of Amit Shah's arrival today evening at around 6 in Jammu, there is a set of meetings that are going on, and now the DG BSF is heading towards the border in Kathua. Well, thank you, Gursimran, for those details. We'll come back to you more on this when the Union Home Minister convenes those meetings. These are the visuals that we are getting from Jammu, where Amit Shah will be heading that meeting, crucial meeting, that too on the backdrop of that anti-terror operation that has been going on for over 15 days in Kathua. Moving on, viewers, as the Ram Navmi celebrations are underway across several state, police and administration have stepped up security measures to avoid any unrest, specifically in the state of West Bengal. This is as a large number of religious rallies are expected to take place throughout the day in parts of Bengal. And in the past, we have seen how during such days, specifically last year in Ram Navmi, there were multiple clashes across the states of West Bengal. And now, to make sure that the law and order remains intact, security has been beefed up across the state of West Bengal. Joining us live on this broadcast is my colleague Bhaskar. Bhaskar, what is the situation like in West Bengal? Because remember, last year there were multiple clashes reported from
across West Bengal. There were incidents of stone pelting. How is it this year? Bhaskar. बिल्कुल देखिए, इस साल जो रामनवमी के उत्सव है वो उत्सव चल रहा है और काफ़ी सारे जगहों पे जो रामनवमी की शोभा यात्रा रोक दिया गया, ऐसा एलिगेशंस भी आ रहे हैं। अब मान लीजिए उत्तर दिनाजपुर के इस्लामपुर, उधर जो रामनवमी की प्रोसेशन चल रहा था वो प्रोसेशन को रोक दिया गया पुलिस की तरफ से। दूसरी तरफ शहर कलकत्ता के अंदर जो केष्टपुर एरिया है वहाँ पे भी ये प्रोसेशन को रोकने का एक कोशिश किया गया, जहाँ पे लॉकेट चैटर्जी जी भी प्रेजेंट थी। और अभी तक देखिए पूरे पश्चिम बंगाल के सारे इलाकों पे ये रामनवमी के जो पूजा अर्चना वो चल रहा है। अभी मेरा वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहा है, ये जो तस्वीरें आ रहे हैं ये है मेचेदा की तस्वीर जो पूर्व मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट पे होता है। और ये मेचेदा पे अभी रामनवमी की जो पूजा अर्चना चल रहा है। दूसरी तरफ जैसे बोल रहे थे कि पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। सिर्फ कलकत्ता पुलिस की एरिया के लिए, कलकत्ता पुलिस रजिस्ट्रेशन के लिए 29 IPS ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। फिर भी जो डर है वो है, आप जिस तरह से बोल रहे थे कि इसके पहले भी काफी सारे क्लैशेस हुआ, स्टोन पेल्टिंग के घटना भी घटी ये रामनवमी के जो प्रोसेशन, उस प्रोसेशन को लेकर इस साल भी ये डर जो ऑर्गेनाइजर्स है उन लोगों के बीच है कि ताकि वापस अटैक ना हो जाए। और अगर इस साल अटैक हुआ रामनवमी की प्रोसेशन पर तो जैसे अटैक होगा वैसे ही जवाब दिया जाएगा, ऐसा ही कहना है सारे ऑर्गेनाइजर्स का। और देखिए काफी सारे जगहों पे प्रोसेशन रोक दिया गया पुलिस की तरफ से। ये छोड़ के अभी तक जो हालत है वो हालत पीसफुल है। एक तरफ जो नंदीग्राम है वहां पे शुभेंदु अधिकारी लीडर ऑफ अपोजिशन उसने भी भाग लिया ये रामनवमी के जो शोभा यात्रा पर। भाजपा के बंगाल की प्रेसिडेंट सुकांत मजुमदार वो भी थे हावड़ा के साथ साथ और काफी सारे जगहों पे। दिलीप घोष वरिष्ठ भाजपा नेता वो भी खड़गपुर, मिदनापुर और पूर्व मिदनापुर मिला के काफी सारे प्रोसेशन पे पार्ट लिए, बाइक रैली भी किए दिलीप घोष जी ने। और देखिए पूरी तरह से जो उत्सव का माहौल है और पश्चिम बंगाल के हर एक कोने पर रामनवमी की जो उत्सव मनाया जा रहा है। बैक टू स्टूडियो। Thank you, Bhaskar, for those details. We'll keep coming back to you as the security remains beefed up across the state of West Bengal. Moving on. Viwas after Mamata Banerjee, now RJD leader and former Bihar Deputy Chief Minister Tejasvi Yadav has promised that Waqf Amendment Bill will be tossed into the dustbin if his party forms a government in the state of Bihar. He said this at his party headquarters, and now what we are learning is that his party has also moved the Supreme Court against the controversial legislation which was passed in the parliament earlier this week and received the consent of the president of the country late last night. And now we have Tejasvi Yadav after Mamata Banerjee said that as soon as her government is formed in the next term as well, they are going to topple this amendment. And echoing similar sentiments, we have Tejasvi Yadav saying he's going to roll it over in the dustbin if RJD forms government in Bihar. Listen in. But Waqf property also, it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come. And that time, must remember, there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। We just heard Mamata Banerjee and Tejasvi Yadav. Now, these statements have enthralled massive flack from the Bharatiya Janata Party that has condemned these reactions coming in from Tejasvi, calling it unfortunate, while adding that the Waqf Amendment Bill is going to help poor Muslims. Listen to it.
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एंटाइटल डायनेस भड़काने की, बहकाने की और चिल्लाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं और AIMPLB को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मैं वक्फ का बिल सरकार आने पर कूड़ेदान में डाल दूंगा। कभी बिल को फाड़ देना, ऑर्डिनेंस को फाड़ देना, कभी कूड़ेदान में डालने की बात करना, ये बताता है कि इनके मन में संविधान नहीं, केवल वोट बैंक की दुकान चलती है। राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए, अब माइनॉरिटीज पर हमला किया जाएगा, पहले मुस्लिम थे, अब क्रिश्चियन पर हमला किया जाएगा। राहुल गांधी जी, तब आप क्यों चुप रहे जब KCBC और CBCI ने कहा कि वो चाहता है वक्त संशोधन हो? Viewers, this statement from the BJP and the Indie bloc leaders has also enthralled reaction from Maulana Rashidi, who is the chief of the Shia board as well. He has said that the Waqf amendment bill is the need of the hour, and specifically for the Muslims who needed it for a very long time. Listen in. देखिए, प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, ये किसी का भी संवैधानिक अधिकार है। कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। एक तो ये है कि पीसफुली होना चाहिए, दूसरे ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल को सही से पढ़ा नहीं है। अगर ये बिल को सही से पढ़ लेते तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। सवाल ये है कि जितने मेंबर्स हैं पर्सनल बोर्ड के, आमतौर से सबके पास वक्फ बोर्ड की जगह है। असदुद्दीन अवैसी के पास हज़ार गज जगह है। बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, उनके पास राजस्थान में हज़ारों गज जगह है बोर्ड की। जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 प्रेसिडेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक है, प्रेसिडेंट 2 हैं, और दोनों ने अपने अलग अलग ऑफिस बना रखे हैं ITO जैसी प्राइम लोकेशन पर। एक 2 बीघे लिए बैठा है 2000 गज, एक के पास 1000 गज है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए की जगह है जो वक्फ बोर्ड की है, और ये लोग उसका किराया तक नहीं देते। इनको डर ये है कि हमारी जगहों का अब नंबर आ गया है, इसलिए मुसलमानों को सामने करना चाहते हैं सरकार के। मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जिसके लिए ये उकसा रहे हैं, जिसके लिए भड़का रहे हैं, कम से कम उस बिल को पढ़ तो लें। Now, Waqf JPC chairman Jagdambika Pal has also condemned the street protest against the landmark piece of legislation, saying it was aimed at bringing a qualitative difference to the lives of the poor Muslims that have been denied opportunity in the past. Listen in. Senior BJP MP Jagdambika Pal, who headed the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, condemned the ongoing street protests against the reformist legislation. Coming out in favor of the bill, which was signed into law by President Draupadi Murmu after its passage by both houses of Parliament, the BJP said it marked the culmination of a long struggle. In a scathing takedown of the dissenters and critics of the landmark law, he said not a single public utility was raised on Waqf land that were donated for the welfare of poor Muslims. इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि वक्फ जो करता था, जिसको वाकिफ कहते हैं, वाकिफ की इंटेंशन होता था कि हम अपनी कमाई का गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, और उसके इनकम से गरीब को, पिछड़ों को, मुसलमान को, महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में या ज़रूरतमंदों को उसकी मदद मिले। लेकिन देश की रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी देश में है, 3rd लार्जेस्ट वक्फ प्रॉपर्टी इन द कंट्री। लेकिन इसके बावजूद भी न कहीं कोई यूनिवर्सिटी था, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था, और उसका फ़ायदा जो केयरटेकर, मुतवल्ली हो गए या वक्फ बोर्ड के अहलकार लोगों को मिलता था। तो ये अपने आप में एक वक्फ के कानून में संशोधन में बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। मुसलमान, पिछड़े, जो पसमानदा गरीब हैं, उनकी स्थिति SC ST से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी। मुस्लिम महिलाएं तो 51.9% इलिटरेट हैं, हायर एजुकेशन में केवल 5% है।
तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में सुधार आना चाहिए। Well, days after Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with the top Myanmar general on the sidelines of BIMSTEC summit, India sent more aid to quake-battered country, taking to his ex-handle. External Affairs Minister S. Jaishankar informed that the Indian C-17 cargo plane has departed for Mandalay with 31 tons of relief material. Take a look at this report. India has sent more emergency relief to quake-battered Myanmar. In a post on his official X handle, External Affairs Minister S. Jaishankar informed that an Indian cargo plane with emergency relief materials left for Myanmar. The C-17 cargo flight, laden with 31 tons of relief, departed for Mandalay. The fresh consignment of relief for the quake-ravaged country follows bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and top Myanmarese General Aung Hlaing. The two leaders met on the sidelines of the BIMSTEC summit in Bangkok. Prime Minister Modi pledged to stand with Myanmar and continue to support the ongoing relief and restoration efforts in the quake-battered country. Let's shift our focus to the state of Kerala, where in a speech laced with provocation and polarization, the SNDP General Secretary Vellapalli Nathesan set off a political firestorm by branding Muslim-majority Malappuram as a separate nation, an outrageous remark that has reeked of communal contempt. He made the remark addressing a gathering at Isaiah community members in that place, where Nathesan claimed that people were living in fear in Malappuram, reduced to the status of voting machines, and denied the very right to breathe freely. He further suggested that the area has been hijacked by a specific religious group, leaving the backward communities sidelined and suffocated. Listen in. യൂണിയനും സമുദായ അംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ പരിമിതികളും പ്രയാസങ്ങളും എനിക്കറിയാം. സ്വാഗത പ്രാസംഗം തന്നെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എല്ലാ തിക്കും നോട്ടും ഞോടും ഒക്കെ മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭയന്നും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു സ്വതന്ത്രമായൊരു വായു ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സ്വതന്ത്രമായൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു പോലും ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. മലപ്പുറം ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യമാണ്, പ്രത്യേക ചില ആളുകളുടെ സംസ്ഥാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പറ്റി, ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ഇത്രയും നാളായിട്ട് പോലും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളുടെ ഒരംശം പോലും ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മലപ്പുറത്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മഞ്ചേരി ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാപനം ഉള്ളതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്കെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാനൊരു അവസരം ലഭിക്കും. ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും, നമുക്കെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അല്ലെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ മലപ്പുറത്ത് എവിടെയുണ്ട്? ഒരു കുട്ടിപ്പള്ളിക്കൂടം പോലും തരുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ പല ഭരണകൂടങ്ങളും വന്നു പോയി. ഈ വന്നവനും പോയവനും എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ കുടുംബസ്വത്തായി കണക്കായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അവകാശങ്ങളും കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഞങ്ങളും കുടുംബക്കാരാണ് എന്നുള്ള വിചാരത്തോടു കൂടി ഈ പിന്നോക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊട്ടും പടിയുമെങ്കിലും അയ്യപ്പൻ ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം പോലും കൊടുത്താനില്ല. ഒരു കോളേജുണ്ടോ അവിടെ? നമുക്ക് ഒരു ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുണ്ടോ? എന്തുണ്ട് മലപ്പുറത്ത്? നമുക്ക് തൊഴിലുറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, അതിലൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പ്രാതിനിധ്യമുണ്ട്. ബാക്കി എന്തിനാണ് നമുക്ക് പ്രാതിനിധ്യം?
എല്ലാവർക്കും വോട്ട് കൊടുക്കാൻ മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. വോട്ട് കുത്തി യന്ത്രങ്ങൾ ഓട്ടോ പിടിക്കാൻ നേരത്തെ എല്ലാം വന്ന് ചേച്ചി പെങ്ങളെ അളിയ പൊന്നെ കറലെ കട്ടണ്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെല്ലാം വരും. അതും മേടിച്ച് ഓട്ടം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ നമ്മൾ ആരും ആലുവ മണത്തോർത്തോലും വെച്ച് കണ്ടതായി ഭാവിക്കാറില്ല, ഒന്നും തരാറില്ല, കിട്ടാറില്ല. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ. Joining us live on this broadcast is my colleague Ashwin. Ashwin, this outrageous remark that has been made, the communal remark has been made, what's the idea behind it? In fact, Velapalli Nateshan is leader of the Irava community, which comprises around 26% of Kerala's population. It's an OBC community, and the speech which Velapalli Nateshan had made was in fact in Nilambur, in Malappuram, where he was saying the activities of the SNDP, the Sri Narayana Dharma Paripalana Sangam, of which he is the head, is not doing enough and well in Malappuram. That is because a majority of their welfare schemes have been hijacked by the other community, which is the Muslim community he was hinting at. He even went on to say that there is a different air, it's difficult to even breathe freely or even give a free opinion in the district of Malappuram. He went on to say that this is it's like a different nation altogether. He has made this remark and he has today again reiterated his stand to the local media over here, very important, because he has said that the SNDP, which runs schools and colleges in other districts, they have not been given an opportunity to make schools and institutions in the district of Malappuram. He went on to even say that these OBC reservations which are there are also not been given to them. In fact, this has been supported by the BJP today. Rajiv Chandrasekhar, the BJP state president, has said that what he has spoken is the absolute truth and it needs to be looked into, because he is the member of the community and he has ears to what the community members are saying in the district. Certainly it has been a very strong words that he has spoken, but here we see that definitely a political rift that is happening, where we see the leader of the SNDP, 26% of Irava community, speaking that there is indifferences in way of treatment that is given to the OBC community vis-a-vis the Muslim community. Certainly it will have a big political ramification in the days to come. Thank you, Ashwin, for those details. We'll keep coming back to you as this statement will snowball into yet another controversy emanating from Malappuram. Now, we was on this auspicious occasion of Ram Navmi, the holy city of Ayodhya in Uttar Pradesh witnessed a divine movement as a ray of sunlight fell directly on the forehead of Ram Lalla idol, a phenomenon known as Surya Tilak. This celestial event symbolically marked the birth of Lord Ram, with sunbeam illuminating the deity's forehead, adding a spiritual glow to the celebration. Surya Tilak occurred exactly at 12 noon, where a beam of sunlight is precisely directed on the forehead of the idol of Ram. புதிய பாம்பன் செங்குத்து தூக்கு பாலம் இந்த மாபெரும் கட்டமைப்பு எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டது? A groundbreaking accomplishment in the history of Indian Railways. Rameswaram, a place of eternal devotion and spirituality on the Pamban Island, where revered Rameswaram temple, one of the 12 auspicious Jyotirlingas of Lord Shiva, and one of the 4 dhams, blesses humanity, where Prabhu Ram worshipped Lord Shiva, where belief and reality come together. Today, on the auspicious day of Ram Navami, we witness history in the making as the new Pamban Bridge, India's first vertical lift railway sea bridge, a modern marvel embodying heritage and legacy, is being dedicated to the nation.
Prime Minister Narendra Modi in Tamil Nadu inaugurating the Pamban Bridge. Stay tuned. We'll be right back after a very short break to get you more on this. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. देगी मिरज का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिरज।中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家。PM Modi inaugurates iconic Pamban Bridge in Rameswaram, also set to launch key development projects worth over 700 crores. Grand Ram Navmi celebrations underway in Ayodhya. Lakhs of devotees gather for Surya Tilak of Lalla. Security heightened across West Bengal amid Ram Navmi celebrations. 29 senior IPS officers to monitor arrangements in Kolkata. It is a very wrong decision. Not because they do not have a right to protest, they do have a right to protest. But I would accuse them of spreading a blatant misinformation campaign. Massive showdown over Waqf Amendment Bill. All India Muslim Personal Law Board faces flack over street anarchy, calls against historic reform. बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। RJD leader Tejaswi Yadav claims Waqf bill will be tossed into the dustbin if the party is elected to power in Bihar. Now, we was yet again in Jadavpur University. Posters with slogans like Azadi and Free Kashmir, Palestine have resurfaced there. Now, this is happening just weeks after massive showdown on campus over the promotion of urban Naxal elements. Graffiti has reappeared on the walls of Jadavpur University. And this has happened during Ram Navmi celebrations are underway across the state. Now, the Chancellor of the university has said that permission for puja on the occasion of Ram Navmi was not even given. So we was on one side, there's no permission given to celebrate Ram Navmi inside Jadavpur University, whereas on the forefront, once again, Free Kashmir, Azad Kashmir, Palestine, such
graffiti has come up again on the walls of Jadavpur, and this is just happening within the months. We've just saw that there was massive protest in Jadavpur University for weeks, and the students had asked for serious discussion on the matter. And once again we are seeing viewers as to how these graffitis have cropped up again inside the Jadavpur University campus. Listen in to some of the reactions we are getting at the moment. ये हमारा बदनसीब है जो हम लोग का देश का जो नेशनल एंथम है, जातीय संगीत है, वो गीत स्टूडेंट लोग को सिखाने के लिए वो लोग एक गीत गाएगा, इसके लिए हमको खून देना पड़ा। उस देश में ये क्या भारत का जातीय संगीत क्या सुदान में गाया क्या? तो यह आजाद कश्मीर लिखा। हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं देश के लिए, देश का अखंडता के लिए, ये दुख का बात है। और ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, धर्म अपना बात है, दिल का बात है, ये डिविजन का बात नहीं है। एक ही धर्म है, राम को सब मानता है। कोई बोलता है जय श्री राम, कोई उसका खिलाफ आवाज उठाता है, क्या बात पता नहीं। Joining me live on this broadcast is my colleague Ridhita. Now Ridhita, yet again we are seeing such graffiti coming up on the walls of Jadavpur University. Remember, you were there when a team of Republic Bangla reporters was brutally heckled by the students, by the staff over there, and we questioned them as to why no action has been taken against these graffitis, and now once again we see such posters coming up. Ridhita. Absolutely, Madhurima. Weeks back, Republic Bangla was reporting from the Jadavpur University campus, and where we were heckled and attacked only to ask question as why are they not removing these anti-national posters from their walls, and it is the same poster which was not removed even after Republic Bangla voicing for it. There was nationwide protest on this poster where the demand for Azad Kashmir, Azad Manipur, Azad Devchapan, all this were raised in a public university in Jadavpur in अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। வணக்கம் என் அன்பு தமிழ் சொந்தங்களே, தமிழ்நாட்டின் ஆளுநர் RN ரவி அவர்களே, மத்திய அமைச்சரவையின் என் சகாக்களான அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அவர்களே, டாக்டர் எல் முருகன் அவர்களே, தமிழ்நாடு அரசின் அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களே, சான்றோர்களே, பெரியோர்களே, என் நெஞ்சுக்கினிய அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, वणक्कम। साथियों, आज राम नवमी का पावन पर्व है। अब से कुछ समय पूर्व अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला का सूर्य की किरणों ने भव्य तिलक किया है। भगवान श्री राम का जीवन, उनके राज्य से मिलने वाली सुशासन की प्रेरणा राष्ट्र निर्माण का बड़ा आधार है। और आज रामनवमी है, मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। நண்பர்களே, இன்று புனிதமான ஸ்ரீ ராம நவமி நன்னாள். சில காலம் முன்பாகத்தான் அயோத்தியிலே பிரம்மாண்டமான ராமர் ஆலயத்திலே ராம் லலாவுடைய திருவதனத்தின் மீது சூரியனின் கதிர்கள் அற்புதமான திலகத்தை பொழிந்தன. பகவான் ஸ்ரீ ராமனின் வாழ்க்கை, அவருடைய ஆட்சியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய நல்லாளுகை குறித்த உத்வேகமாகியன தேசத்தை நிர்மாணிப்பதில் பெரிய ஆதாரமாக இருக்கின்றன. இன்று ராம நவமியாக இருப்பதால்
என்னுடன் அனைவரும் முழங்குங்கள். ஜெய் ஸ்ரீராம். तमिलनाडु के संगम कालीन साहित्य में भी श्री राम के बारे में कहा गया है. मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. தமிழ்நாட்டின் சங்ககால இலக்கியத்திலும் கூட ஸ்ரீ ராமபிரானை பற்றி கூறப்பட்டிருக்கின்றது. நான் ராமேஸ்வரத்தின் இந்த பவித்திரமான பூமியிலே நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் ஸ்ரீ ராம நவமியை ஒட்டி என் இதயபூர்வமான நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, I feel blessed that I could pray at the Ramanatswami temple today. On this special day, I got the opportunity to hand over development project worth 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. நண்பர்களே, ராமநாத சுவாமி ஆலயத்தில் இன்று வழிபட்ட போது ஆசிகள் நிரம்ப பெற்றவனாய் நான் உணர்ந்தேன். இந்த விசேஷமான நாளன்று 8,300 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நலத்திட்டங்களை அர்ப்பணிக்கும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைத்தது. இந்த ரயில் மற்றும் சாலை திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டிலே இணைப்பு திறனை வலுப்படுத்தும். இந்த திட்டங்களின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டின் என் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நான் என் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். Friends, this is the land of Bharat Ratna Dr. Kalam. His life showed us that science and spirituality complement each other. Similarly, the new Pamban Bridge to Rameswaram brings technology and tradition together. நண்பர்களே, இது பாரத் ரத்னா டாக்டர் கலாம் அவர்களின் பூமி. அறிவியலும் ஆன்மீகமும் ஒன்றையொன்று நிறைவு செய்பவை என்பது அவருடைய வாழ்வு நமக்கு காட்டுகிறது. அதே போல ராமேஸ்வரத்திற்கான இந்த புதிய பாம்பன் பாலமும் கூட தொழில்நுட்பத்தையும் பாரம்பரியத்தையும் ஒன்று சேர்க்கின்றது. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு நகரம் 21ஆம் நூற்றாண்டின் ஒரு பொறியியல் அற்புதத்தால் இன்று இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தங்களுடைய தீவிரமான உழைப்பிற்காக நான் நமது பொறியாளர்களுக்கு என் நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன். This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. I just flag off a new train service and also a ship a short while ago. Once again, I congratulate the people of Tamil Nadu for this project. இந்த பாலம்தான் இந்தியாவின் முதல் செங்குத்து தூக்கு ரயில் வழி கடல் பாலம். இதற்கடியிலே பெரிய கப்பல்களாலும் பயணத்தை மேற்கொள்ள முடியும்.
ரயில்கள் இதன் மீது விரைவாக பயணிக்க இயலும். நான் சற்று நேரம் முன்னதாகத்தான் ஒரு புதிய ரயில் சேவையையும் ஒரு கப்பல் பயணத்தையும் துவக்கி வைத்தேன். இந்த திட்டத்தின் பொருட்டு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நான் மீண்டும் என் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். Friends, for many decades there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people. நண்பர்களே, இந்த பாலத்திற்கான தேவை பல பத்தாண்டுகளாக இருந்து வந்திருக்கின்றது. உங்கள் நல்லாசிகளோடு இந்த பணியை நிறைவு செய்யும் பேறு எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. பாம்பன் பாலம் சுலபமாக வியாபாரம் செய்தல் மற்றும் சுலபமாக பயணம் மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றுக்கு ஆதரவாக இருக்கின்றது. பல லட்சக்கணக்கான மனிதர்களின் வாழ்விலே இது ஆக்கப்பூர்வமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். The new train service will improve the connectivity from Rameswaram to Chennai and other parts of the country. This will benefit both trade and tourism in Tamil Nadu. New jobs and business opportunities will also be created for the youth. ராமேஸ்வரம் தொடங்கி சென்னை வரையும் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கும் இடையிலான இணைப்பினை இந்த புதிய ரயில் சேவை மேம்படுத்தும். தமிழ்நாட்டின் சுற்றுலா மற்றும் வணிகத்திற்கு இது ஆதாயங்களை அள்ளித்தரும். இளைஞர்களுக்கான புதிய வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் சந்தர்ப்பங்களை இது ஏற்படுத்தி தரும். साथियों, बीते 10 वर्षों में भारत ने अपने इकोनॉमी का साइज दोगुना किया है. इतनी तेज ग्रोथ का एक बड़ा कारण हमारा शानदार मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर भी है. बीते 10 सालों में हमने रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, बिजली, पानी, गैस पाइपलाइन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट करीब 6 गुना बढ़ाया है. நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே பாரதம் தனது பொருளாதாரத்தின் அளவினை இரட்டிப்பாக்கி இருக்கின்றது. இத்தனை விரைவான வளர்ச்சிக்கான ஒரு பெரிய காரணம் என்று சொன்னால் நமது அருமையான நவீன கட்டமைப்பும் அதில் அடங்கும். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் நாம் ரயில், சாலை, விமான நிலையம், துறைமுகங்கள், மின்னாற்றல், நீர், எரிவாயு குழாய்கள் போன்ற கட்டமைப்புகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீட்டை 6 மடங்கு உயர்த்தி இருக்கின்றோம். आज देश में बहुत तेजी से मेगा प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है. आप नॉर्थ में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज में से एक चिनाब ब्रिज बना है. वेस्ट में जाएंगे तो मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु बना है. ईस्ट में जाएंगे तो असम के बोगीबील ब्रिज के दर्शन होंगे और साउथ में आते हैं तो दुनिया के गिने चुने वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में से एक पंबन ब्रिज का निर्माण पूरा हुआ है. இன்று தேசத்தின் மிக விரைவாக மெகா திட்டங்கள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வடக்கிலே நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் ஜம்மு காஷ்மீரத்திலே உலகின் மிக உயரமான ரயில் பாலங்களில் ஒன்றான சினாப் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. மேற்கிலே பார்த்தீர்கள் என்றால் மும்பையிலே
தேசத்தின் மிக நீளமான கடல் பாலமான அடல் பாலம் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. கிழக்கிலே கவனித்தோம் என்றால் அசாமின் போகிபீல் பாலத்தை நீங்கள் பார்க்கலாம். மேலும் தெற்கு நோக்கி பயணித்தால் உலகின் வெகு குறைவான செங்குத்து உயர்த்தல் கொண்ட பாலங்களில் ஒன்றான பாம்பன் பாலத்தின் நிர்மாணம் நிறைவடைந்திருக்கின்றது. इसी तरह ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो रहे हैं. देश की पहली बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम चल रहा है. वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें रेल नेटवर्क को और आधुनिक बना रही है. இதைப் போலவே கிழக்கு மற்றும் மேற்கு பிரத்யேகமான சரக்கு போக்குவரத்து இடைவெளியும் கூட அமைக்கப்பட்டு வருகின்றது. தேசத்தின் முதல் புல்லட் ரயில் தொடர்பான பணிகளும் விரைவாக நடந்தேறி வருகின்றன. வந்தே பாரத், அம்ருத் பாரத் மற்றும் நமோ பாரத் போன்ற நவீன ரயில்களும் ரயில் வலைப்பின்னலை மேலும் நவீனப்படுத்தி வருகின்றன. साथियों, जब भारत का हर रीजन आपस में कनेक्ट होता है तो डेवलप्ड नेशन बनाने का रास्ता मजबूत होता है. दुनिया के हर डेवलप्ड नेशन, हर डेवलप्ड रीजन में यही हुआ है. आज जब भारत का हर स्टेट आपस में कनेक्ट हो रहा है तो पूरे देश का पोटेंशियल सामने आ रहा है. इसका बेनिफिट भी देश के हर रीजन को हो रहा है, हमारे तमिलनाडु को हो रहा है. நண்பர்களே, பாரதத்தின் அனைத்து பகுதிகளும் பரஸ்பர இணைப்புகள் உடையவையாக ஆகும்போது வளர்ந்த தேசமாக ஆகும் பாதை மேலும் வலுவடைகிறது. உலகின் அனைத்து வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளில் வளர்ச்சிக்கான காரணம் இதுதான். இன்று பாரதத்தின் அனைத்து மாநிலங்களும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைக்கப்படும் போது தேசத்தின் ஒட்டுமொத்த சாத்தியங்களும் வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. இவற்றின் ஆதாயங்களும் கூட தேசத்தின் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் கிடைக்கின்றன. நமது தமிழ்நாட்டிற்கும் கிடைத்து வருகின்றது. साथियों, विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है. मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी. बीते दशक में तमिलनाडु के विकास के लिए 2014 से पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा पैसा सेंटर से दिया गया है. जब इंडी अलायंस की सरकार थी, डीएमके उस सरकार में विराजमान थी, तब जितना पैसा मिला उससे 3 गुना मोदी सरकार ने दिया है. इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत बड़ी मदद मिली है. நண்பர்களே, வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் நோக்கிய பயணத்தில் தமிழ்நாட்டிற்கென மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் வல்லமை எத்தனை அதிகம் உயர்கிறதோ பாரதத்தின் வளர்ச்சியும் அந்த அளவுக்கு விரைவாகும் என்று நான் கருதுகிறேன். கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சிக்காக 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முந்தைய காலத்துடன் ஒப்பு நோக்கும் போது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் ஆட்சி கூட்டணியில் இருந்தபோது இருந்ததை விட 3 மடங்கு அதிக நிதியை மத்திய அரசு அளித்திருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதாரம் மற்றும் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கு இது மிக அதிக அளவு உதவி இருக்கின்றது. साथियों, तमिलनाडु का इंफ्रास्ट्रक्चर
भारत सरकार की प्रायोरिटी है। बीते एक दशक में तमिलनाडु का रेलवे बजट 7 टाइम्स से ज्यादा इंक्रीज किया गया है। நண்பர்களே, தமிழ்நாட்டின் கட்டமைப்பு தான் பாரத அரசின் முதன்மை. கடந்த 10 ஆண்டிலே தமிழ்நாட்டின் ரயில் துறை பட்ஜெட்டிலே 7 மடங்கிற்கும் அதிகமான அதிகரிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. इसके बावजूद भी कुछ लोगों को बिना कारण रोते रहने की आदत है, वो रोते रहते हैं। இவற்றையெல்லாம் செய்த பிறகும் கூட சிலர் அழுது கொண்டே இருக்கிறார்கள். அவர்களால் அழ மட்டுமே முடியும். அவர்கள் அழுதுவிட்டு போகட்டும். 2014 से पहले रेल प्रोजेक्ट के लिए हर साल सिर्फ ओनली 900 करोड़ रुपीस ही मिलते थे। और आपको पता है उस समय इंडियन आइस के मुख्य कर्ता धर्ता कौन थे, ये आपको पता है। इस वर्ष तमिलनाडु का रेल बजट 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत सरकार यहां के 77 रेलवे स्टेशन को मॉडर्न भी बना रही है। इसमें रामेश्वरम का स्टेशन भी शामिल है। 2014ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பு வரை ரயில் துறை திட்டங்களுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் வெறும் 900 கோடி ரூபாய் மட்டுமே கிடைத்து வந்தது. அப்போதெல்லாம் கூட்டணியிலே யார் ஆட்சியில் அமர்ந்திருந்தார்கள் என்பதை நான் கூற தேவையே இல்லை. இந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் ரயில் பட்ஜெட் 6000 கோடி ரூபாய்க்கும் அதிகம். பாரத அரசு தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் 77 ரயில் நிலையங்களையும் நவீனப்படுத்தும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றது. இதிலே ராமேஸ்வரம் ரயில் நிலையமும் இடம் பெற்றிருக்கின்றது. साथियों, लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों के रोड और हाईवे के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। 2014 के बाद तमिलनाडु में केंद्र सरकार की मदद से 4000 किलोमीटर रोड्स बनी है। चेन्नई पोर्ट को कनेक्ट करने वाला एलिवेटेड कॉरिडोर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा। நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே கிராமப்புற சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் துறையிலே கூட ஏராளமான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றன. 2014ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டிலே மத்திய அரசின் உதவியோடு 4000 கிலோமீட்டர் அளவுக்கு சாலைகள் போடப்பட்டிருக்கின்றன. சென்னை துறைமுகத்தை இணைக்கவல்ல உயர்த்தப்பட்ட இடைவழி அருமையான கட்டமைப்பிற்கான மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு. आज भी करीब 8000 करोड़ रुपीस के रोड प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के साथ ही आंध्र प्रदेश के साथ भी कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे।
இன்றும் கூட சுமார் 8000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சாலை திட்டங்களுக்கான அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு இவை தேசத்திற்கு அர்ப்பணம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களோடு மட்டுமல்லாமல் ஆந்திர பிரதேசத்துடனான இணைப்பையும் மேம்படுத்தும். साथियों, चेन्नई मेट्रो जैसा मॉडर्न पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी तमिलनाडु में ईज ऑफ ट्रैवल को बढ़ा रहा है. हमें याद रखना है, जब इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है तो इससे हर सेक्टर में नई जॉब भी क्रिएट होती है. मेरे नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं. நண்பர்களே, சென்னை மெட்ரோ போன்ற நவீன பொதுமக்கள் போக்குவரத்து வசதியும் கூட தமிழ்நாட்டிலே சுலபமான பயணம் மேற்கொள்ளுதலை மேம்படுத்துகிறது. இத்தனை பெரிய அளவில் கட்டமைப்புகள் தொடர்பான பணிகள் நடைபெற்று வரும் வேளையிலே இவற்றின் அனைத்து துறைகளிலும் புதிய வேலை வாய்ப்புகளும் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. என்னுடைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றன என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், மறந்துவிடக் கூடாது. साथियों, बीते दशक में भारत ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी रिकॉर्ड निवेश किया है. मुझे खुशी है कि तमिलनाडु के करोड़ों गरीब परिवारों को इसका बेनिफिट मिल रहा है. बीते 10 साल में 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर देश भर के गरीब परिवारों को मिले हैं और इसमें पीएम आवास योजना के तहत 12 लाख से ज्यादा पक्के घर यहां तमिलनाडु में मेरे गरीब परिवार के भाई बहनों को मिले हैं. நண்பர்களே, கடந்த 10 ஆண்டிலே பாரதம் சமூக கட்டமைப்பிலும் கூட சாதனை காணும் அளவுக்கு முதலீடுகளை செய்திருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் கோடானு கோடி குடும்பங்களுக்கும் இவற்றால் ஆதாயம் கிடைத்து வருவது எனக்கு மட்டற்ற மகிழ்ச்சியை அளிக்கின்றது. கடந்த 10 ஆண்டிலே 4 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு கான்கிரீட் வீடுகள் தேசமெங்கும் இருக்கும் ஏழை குடும்பங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்றது. இவற்றிலே பிரதம மந்திரி குடியிருப்பு திட்டத்தின்படி 12 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கான்கிரீட் வீடுகள் இங்கே என்னுடைய ஏழை சகோதர சகோதரிகள் தமிழ்நாட்டிலே அவர்களுக்கு கிடைத்துவிட்டன. पिछले 10 सालों में गांवों में करीब 12 करोड़ परिवारों तक पहली बार पाइप से वाटर नीर पहुंचाया गया है. इसमें 1 करोड़ 11 लाख फैमिलीज मेरे तमिलनाडु की है. इनके घर में पहली बार टैप वाटर पहुंचा है. इसका बहुत बड़ा लाभ तमिलनाडु की मेरी माताओं बहनों को मिला है. கடந்த 10 ஆண்டுகளிலே கிராமங்களில் 12 கோடி குடும்பங்களுக்கு முதன்முறையாக குழாய் வழி குடிநீர் கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றிலே 1 கோடி 11 லட்சம் குடும்பங்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவை. இவர்களுடைய இல்லங்களிலே முதன்முறையாக குழாய் வழி குடிநீர் சென்றடைந்திருக்கிறது. இதனால் மிகப்பெரிய ஆதாயம் அடைந்தவர்கள் நம்முடைய தாய்மார்கள் சகோதரிகள் தான். साथियों, देशवासियों को क्वालिटी और सस्ता इलाज देने से
ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। आप देखिए, आयुष्मान योजना के तहत तमिलनाडु में 1 करोड़ से ज्यादा ट्रीटमेंट्स हो चुके हैं। इससे तमिलनाडु के इन परिवारों के 8,000 करोड़ रुपीज जो उनकी जेब में से खर्च होना था, वो खर्च बच गया है। मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 8,000 करोड़ रुपीज, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। நண்பர்களே, நாட்டு மக்களுக்கு தரமான மற்றும் விலை மலிவான சிகிச்சை அளிக்கும் விஷயத்தில் நமது அரசாங்கம் அர்ப்பணிப்போடு செயல்கள் புரிந்து வருகின்றது. நீங்களே பாருங்கள், ஆயுஷ்மான் பாரதம் திட்டத்தின்படி தமிழ்நாட்டிலே 1 கோடிக்கும் மேற்பட்ட சிகிச்சைகள் நடைபெற்றாகிவிட்டன. இவற்றிலே தமிழ்நாட்டின் இந்த குடும்பங்கள் 8,000 கோடி ரூபாய், சிறிய தொகை அல்ல, 8,000 கோடி ரூபாய் செலவிலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். என்னுடைய தமிழ் சொந்தங்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருக்கின்றார்கள். तमिलनाडु में 1400 से अधिक जन औषधि केंद्र हैं। ये मैं सिर्फ तमिलनाडु का बताता हूं। यहां जन औषधि केंद्र में 80% डिस्काउंट पर दवाएं मिलती है। इन सस्ती दवाओं से भी लोगों की जेब में 700 करोड़ रुपीज, मेरे तमिलनाडु के भाई बहनों के जेब में 700 करोड़ रुपीज की सेविंग हुई है। और इसलिए मैं तमिलनाडु के मेरे भाई बहनों को कहूंगा, अगर आपको दवाई खरीदनी है तो जन औषधि केंद्र से खरीदिए। आपको 1 रुपये की चीज 20 पैसे में, 25 पैसे में, 30 पैसे में मिल जाएगी। தமிழ்நாட்டிலே 1400க்கும் அதிகமான மக்கள் மருந்தகங்கள் இருக்கின்றன. 1400 நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் மட்டுமே. இங்கே 80% வரையிலான தள்ளுபடி விலையிலே மருந்துகள் கிடைக்கின்றன. இந்த மலிவு விலை மருந்துகளாலும் கூட மக்களுக்கு 700 கோடி ரூபாய் சேமிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே தான் கூறுகிறேன், நீங்கள் மருந்துகள் வாங்க வேண்டும் என்றால் இந்த மக்கள் மருந்தகங்களிலே வாங்குங்கள். 25 பைசா, 30 பைசா, 50 பைசாவிற்கு கூட உங்களுக்கு மருந்துகள் கிடைக்கும். साथियों, हमारा प्रयास है कि देश के नौजवानों को डॉक्टर बनने के लिए एब्रॉड जाने की मजबूरी ना रहे। बीते सालों में तमिलनाडु को 11 नए मेडिकल कॉलेज मिले हैं. நண்பர்களே, நாட்டின் இளைஞர்கள் மருத்துவ படிப்பு படிக்க அயல் நாடுகளுக்கு செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படக்கூடாது என்பதே எங்களுடைய முயற்சி. கடந்த ஆண்டுகளிலே தமிழ்நாட்டிற்கு 11 புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் கிடைத்திருக்கின்றன. साथियों, देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है. अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं. मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके. மருத்துவ படிப்பினை அதை தமிழிலே செய்ய வேண்டும்
என்பதே எங்களுடைய பேரவா. இதற்காக இந்த படிப்பினை படித்த ஏழை தாய்மார்களுடைய குழந்தைகளும் அவர்களாலும் இதை படிக்க முடியும். அதற்காகத்தான் மருத்துவ படிப்பினை கூட தமிழிலே அதை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இதன் பொருட்டு நான் வேண்டி விரும்பி மாநில அரசிடமும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன், இந்த ஏழை குழந்தைகளும் மருத்துவ படிப்பை படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாடத்திட்டத்தினை தமிழ் மொழியிலே செய்து தாருங்கள் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன். साथियों, टैक्स पेयर का दिया हर पैसा गरीब से गरीब के काम आए, यही गुड गवर्नेंस है. तमिलनाडु के लाखों स्मॉल फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 12,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं. तमिलनाडु के फार्मर्स को पीएम फसल बीमा स्कीम से भी 14,800 करोड़ रुपए का क्लेम मिला है. நண்பர்களே, வரி செலுத்துபவர்கள் செலுத்தும் பணம் மிகவும் ஏழ்மையில் வாடும் மக்களுக்கு துணை வர வேண்டும். இதுதான் நல்லாளுகை. தமிழ்நாட்டின் லட்சக்கணக்கான சிறு விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி விவசாயிகளுக்கான வருமான ஆதரவு திட்டத்தின்படி சுமார் 12,000 கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. தமிழ்நாட்டின் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் வாயிலாக 14,800 கோடி ரூபாய் காப்புறுதி பணம் கோரல் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது. साथियों, भारत की ग्रोथ में हमारी ब्लू इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. इसमें तमिलनाडु की ताकत दुनिया देख सकती है. तमिलनाडु का हमारा फिशरीज से जुड़ा समाज बहुत मेहनती है. तमिलनाडु के फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टेट को जो भी मदद चाहिए वो केंद्र सरकार दे रही है. நண்பர்களே, பாரதத்தின் வளர்ச்சியில் நமது நீல பொருளாதாரத்திற்கு மிகப்பெரிய பங்கு அமைய இருக்கின்றது. இதிலே தமிழ்நாட்டின் பலத்தை உலகமே பார்த்து வியக்க இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டின் நம்முடைய மீனவ சமூகம் மிகவும் கடினமாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு சமூகமாகும். தமிழ்நாட்டின் மீன்வளத்துறை கட்டமைப்பினை வலுப்படுத்த வேண்டி மாநிலத்திற்கு தேவையான உதவிகள் அனைத்தையும் மத்திய அரசு அளித்து வருகின்றது. पिछले 5 साल में पीएम मत्स्य संपदा स्कीम के तहत भी तमिलनाडु को करोड़ों रुपए मिले हैं. हमारी कोशिश यही है कि मछुआरों को ज्यादा फैसिलिटीज मिले, आधुनिक सुविधाएं मिले, चाहे सीवीड पार्क हो या फिर फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर हो. केंद्र सरकार यहां सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है. கடந்த 5 ஆண்டுகளிலே பிரதம மந்திரி மீன்வள திட்டங்களின்படி தமிழ்நாட்டிற்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் நிதியாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிகபட்ச நவீன வசதிகள் நமது மீனவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே நம்முடைய முயற்சியாக இருக்கிறது. அது கடற்பாசி பூங்காவாகட்டும், மீன்பிடி துறைமுகமாகட்டும், படகுத்துறையாகட்டும், மத்திய அரசு இங்கே பல நூற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்து வருகின்றது. हमें आपकी रक्षा सुरक्षा की भी चिंता है. भारत सरकार
फिशरमैन के हर संकट में उनके साथ खड़ी है। भारत सरकार के प्रयासों से बीते 10 साल में 3,700 से ज्यादा फिशरमैन श्रीलंका से वापस लौटे हैं। इनमें से 600 से अधिक फिशरमैन तो पिछले 1 साल में फ्री हुए हैं। और आपको याद होगा, कुछ हमारे मछुआरा साथियों को फांसी की सजा हुई थी, उनको भी हम जिंदा भारत लौट करके ला करके उनके परिवार को सुपुर्द किया है। நமது பாதுகாப்பு தொடர்பான அக்கறையும் நமக்கு இருக்கிறது. பாரத அரசு மீனவர்களின் அனைத்து சங்கட காலங்களிலும் அவர்களுக்கு தோளோடு தோள் கொடுத்து வந்திருக்கின்றது. பாரத அரசின் முயற்சிகள் காரணமாக கடந்த 10 ஆண்டுகளில் மட்டும் 3700க்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் இலங்கையிலிருந்து மீட்டுக் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இவர்களிலே 600க்கும் அதிகமான மீனவர்கள் மட்டும் கடந்த ஓராண்டிலே மீட்டுக் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்றார்கள். உங்களுக்கெல்லாம் நன்கு நினைவிருக்கலாம், சில காலம் முன்பாக தூக்கு மேடையை முத்தமிட அவர்கள் போடப்பட வேண்டிய அந்த காலகட்டத்தில் நம்முடைய மீனவர்களை இலங்கையிலிருந்து நம்முடைய மத்திய அரசு மீட்டுக் கொண்டு வந்திருக்கிறது. साथियों, आज दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। लोग भारत को जानना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। इसमें भारत के कल्चर का, हमारी सॉफ्ट पावर का भी बड़ा रोल है। तमिल लैंग्वेज और हेरिटेज दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, इसके लिए भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है. நண்பர்களே, இன்று உலகில் பாரதம் அனைவரையும் ஈர்க்கும் மையமாக மாறியிருக்கிறது. மக்கள் பாரதம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறார்கள், புரிந்து கொள்ள விழைகிறார்கள். இதிலே பாரதத்தின் கலாச்சாரம், நம்முடைய மின் சக்திக்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கின்றது. தமிழ் மொழி மற்றும் மரபு உலகின் அனைத்து இடங்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும். இதற்காக அரசாங்கம் தொடர்ந்து முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूं, तमिलनाडु के कुछ नेताओं की चिट्ठियां जब मेरे पास आती हैं, कभी भी कोई नेता तमिल भाषी में सिग्नेचर नहीं करता है. अरे तमिल का गौरव हो, मैं सबसे कहूंगा कम से कम तमिल भाषा में अपनी सिग्नेचर तो करो. வழக்கமாக எனக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து சில தலைவர்கள் கடிதங்கள் எழுதுவதுண்டு, மடல்கள் எழுதுவதுண்டு. அந்த கடிதங்களிலே எனக்கு மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் என்னவென்றால், கடிதம் என்னமோ ஆங்கிலத்திலே இருக்கிறது, ஆனால் கையெழுத்தும் ஆங்கிலத்திலேயே இருக்கிறது. குறைந்தபட்சம் கையெழுத்தையாவது தமிழ் மொழியிலே போடக்கூடாதா என்று நான் வியப்பதுண்டு. मैं मानता हूं कि 21st सेंचुरी में इस ग्रेट ट्रेडिशन को हमें और आगे ले जाना है. मुझे विश्वास है कि रामेश्वरम और तमिलनाडु की ये धरती हमें ऐसे ही निरंतर नई ऊर्जा देती रहेगी, नई प्रेरणा देती रहेगी. நண்பர்களே, இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டில்
நாம் இந்த மகத்தான பாரம்பரியத்தை மேலும் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டும் என்பதே என் உறுதியான கருத்து. ராமேஸ்வரம் மற்றும் தமிழ்நாட்டின் இந்த மண் இன்று போல என்றும் தொடர்ந்து புதிய சக்தியை அளித்து வரும், புதிய உள்ளெழுச்சியை அளித்து வரும் என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் ஐயமில்லை. और आज भी देखिए कितना सुभग संयोग है, राम नवमी का पवित्र दिवस है, रामेश्वरम की धरती है और यहां पर जिस पन्नम ब्रिज का आज उद्घाटन हुआ, 100 साल पहले जो पुराना ब्रिज था उसको बनाने वाला व्यक्ति गुजरात में जन्म लिया था और आज 100 साल के बाद उसका नया ब्रिज बनाने का उद्घाटन करने का बाद भी उस व्यक्ति को मिला है जो भी गुजरात में पैदा हुआ है. நண்பர்களே, இன்று மிகவும் பவித்திரமான புனிதமான ஒரு நன்னாள். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், ராம நவமி. இங்கே இந்த பவித்திரமான இடத்திலே நாம் பாம்பன் பாலத்தை சில காலம் முன்பாகத்தான் அதை துவக்கி வைத்தோம். ஒரு ஆச்சரியமான தற்செயல் நிகழ்வு என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பாம்பன் இடத்திலே பாலத்தை கட்டியவர் யார் தெரியுமா? அவர் ஒரு குஜராத்தி. இதில் தற்செயல் நிகழ்வு என்னவென்றால், 100 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இதே பாம்பனில் இங்கு ஒரு பாலத்தை திறந்து வைப்பதும் அதே குஜராத்தில் பிறந்த நான். साथियों, आज जब रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है. आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है. सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है. 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है. मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है. आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्र हित में लिए जा रहे हैं वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है. நண்பர்களே, இந்த புனிதமான ராமேஸ்வரம் பூமியிலே ராம நவமி நன்னாளிலே எனக்கு ஒரு உணர்ச்சி வயப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை என் மனதில் நிலவுகிறது. இன்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நிறுவன நாளும் கூட. சக்தி படைத்த, தன்னிறைவு கொண்ட, வளர்ச்சியடைந்த பாரதம் என்ற லட்சியத்தை மனதிலே தாங்கி நாம் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதற்காக பலர் 2, 3, 4 தலைமுறைகளாக கூட தங்கள் வாழ்க்கையை, பல தலைமுறைகளாக தங்கள் அனைத்தையும் இழந்து இதனை ஈட்டி இருக்கின்றோம். நாம் இதிலே பாரதிய ஜனதா கட்சியின் அனைத்து தொண்டர்களின் கடினமான உழைப்பு அடங்கி இருக்கிறது.
ஆகையினால்தான் இன்று நாட்டு மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இந்த தேசத்து மக்கள் நமக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள். இந்த நாட்டு மக்கள் அனைவரும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நல்லாளுகையை கவனித்து வருகிறார்கள். தேசத்தின் நலன்களின் பொருட்டு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் தீர்மானங்களை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். देश के हर राज्य, हर कोने में जिस तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, वो देखकर मुझे गर्व होता है. मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं. मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं. தேசத்தின் அனைத்து மாநிலங்கள், அனைத்து மூலைகளிலும் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தொண்டர்கள் கள அளவிலே மக்களோடு இணைந்து ஏழைகளுக்கு சேவையாற்றி வருகின்றார்கள் என்பதை பார்த்து எனக்கு பேருவகையாக பெருமிதமாக இருக்கின்றது. நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் கோடிக்கணக்கான தொண்டர்களுக்கு என்னுடைய நன்றிகளை சமர்ப்பிக்கின்றேன். உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய இனிய நல்வாழ்த்துக்களை காணிக்கையாக்குகின்றேன். एक बार फिर आप सभी को तमिलनाडु के इन सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. नंद्री, मुणक्कम, मिंडोम, संदीपम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாட்டின் இந்த அனைத்து வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கான நல்வாழ்த்துக்கள். And viewers, that was Prime Minister Narendra Modi's mega rally in Rameswaram, Tamil Nadu, where he has almost kicked off the political campaign for the upcoming 2026 Tamil Nadu elections. We'll bring you all the details on that story in just a moment. Stay tuned to Republic TV. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार. MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल. ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े. क्या निराला MDH मसाला. The US is taking on all countries in terms of countries that have bilateral trade surpluses with the US. So the US has deficits with China, Canada, Mexico, India, Korea, Japan. So those are the countries that are being slapped with higher tariffs. And the only country so far that has retaliated is China. The EU, which has been slapped with a tariff of 20%, is negotiating. Despite the rhetoric, the EU is actually negotiating to reduce. MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का. MDH की देगी मिर्च. QS&THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. There will be no global recession. So, firstly, there will be no US recession, there will be no global recession. This talk of recession is
completely overblown. People talk of recession partly because of the Smoot-Hawley tariffs of 1930. That was an 80% tariff imposed on almost all countries. One of the biggest sufferers from it was Japan then, and Japan responded with Takahashi Korekiyo. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। After hours of heated debate, the Waqf Amendment Bill has been passed in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It is now waiting for a nod from the President. Even though the government has made it amply clear that none of its provisions are anti-Muslim, thousands gathered on the streets of Kolkata, Chennai and Ahmedabad after weekly Friday prayers to protest against the Waqf Amendment Bill. Nationwide protests erupted a day after Parliament cleared the Waqf Amendment Bill, with demonstrators calling the legislation anti-Muslim. Hello and welcome. Today we are joined by a very special guest. He is US President Donald Trump's close aide, industrialist, donor, public speaker, and interestingly, the originator of the catchy phrase, Ab ki baar Trump Sarkar. Please welcome Mr. Shalabh Kumar, founder of the Republican Hindu Coalition and chair for 2016 Indian Americans for Trump campaign. Mr. Kumar, thank you very much for joining us on Republic TV. Thanks for inviting me on this program. I'll add a couple more things. Besides the first phrase, the president has said again in Hindi, Bharat and America, sabse achhe dost. So that is on the record. And I'm also the official chairman of the Hindu and Indian coalition of the party, the Republican National Committee, which is the party itself. You know, that's like your BJP's parliamentary board. Just to get started, Mr. Kumar, Donald Trump announced a 26% tariff on India just 2 days ago. And you said that you were among the first few voices who said that it's a golden opportunity for India. I want to understand from you, how do you think it is a golden opportunity for India, sir? It has to be looked in from an overall global perspective. First, the biggest, China. China is going to face 54% duty on all its products. It is the biggest exporter to the United States. $400 billion per year of manufactured goods go from China to the United States every year. Guess what will happen to those goods when it is 54% more expensive? So a lot of it is going to move. My prediction is it'll take a couple of years, but 250 or so will move to United States. But there are products, 150 billion or so, like I'm in the electronics business, so I know that very well. Out of the 400 billion, 300 billion is electronic products.
like modems, like Ethernet switches, and products like that. There's a lot of products where it will be better suited for India to manufacture those, take up that slack, which is going to happen in China. Another good thing which has happened with these reciprocal tariffs is a lot of manufacturers, a lot of business owners, companies, large companies in Japan, in Taiwan, in Europe, in America, they were planning to move their operations from China to Vietnam. Vietnam was the second one. But now Vietnam now faces 46%. So that thing is now grounded. Correct. So compare that to 26% with India, and I am quite positive that President Trump and Modi and both the governments are going to come up with a bilateral agreement, maybe not necessarily by the end of this year, but certainly by the end of 2026, where the tariffs between the two countries are going to go down to zero. So now look at, from a manufacturer, from a businessman point of view, how much now leverage you have. To begin with, the labor cost in India is half to 1/3 of the Chinese labor. Correct. So you got an advantage there. You got an advantage that they're going to have a 54% and you're going to have at most 26, but more like 0, bilateral, maybe 10. So huge advantage there. India also, on top of everything, I'm a graduate of Punjab Engineering College, PEC, back in 1969, 55 years. So I know a lot of people. India has the smartest engineers, not only in hardware, in firmware, in software, a great majority in Tamil Nadu, in Chennai, in Pune, everywhere. There are so many smart engineers and entrepreneurs that could take up this opportunity and replace China as the principal manufacturer of these goods. And I'm talking about just electronics. I'm sure it's everywhere else as well. And so that's why I say this is a moment for India as important as 1991, when it broke its old methodology, old methods, and opened up the country, opened up for trade and everything, for imports, and got the technology in. This is an equally important moment. I don't think moments like that arrive that easily. I haven't seen, let's say, in 55 years in the United States. I came to the United States when I was, I'll give my age here, I was 20 years old. Okay. So I've been here 55 years. And in those 55 years, I have not seen that great, big of an opportunity. There are, of course, the President Trump and Modi, camaraderie and hugs and handshakes and all that, that takes place. That's for, let's say, perception, to create atmosphere. But the reality on the ground, is extremely strong for India, Bharat, to take this opportunity and run with it. But then that's precisely the point that I want to come to, sir, that despite the Modi and Trump bonhomie that we've seen on screen, Indians are somehow thinking that the 26% that has been imposed on India is not a sweet deal. What do you think about that? Is it really not a sweet deal? What must have gone behind, sir? Oh, 26% as compared to all the others. Just look at that. Compared to all the others, it's a lot less.
And the United States right now is not engaged with any other country. Is it engaged with Vietnam? Is it engaged with China on BTA, bilateral trade agreement? Okay, so with Mexico, Canada, no. It's not engaged in those bilateral trade agreements. So this is actually a phenomenal happening, which is just took place on April 2nd for Bharat. Can you put this in numbers for us, sir? I want to understand from you, over the next few years, how is this moment that you're saying as a golden moment going to define India's position as the Vishwaguru, as one of the topmost economies in global order? How is this moment, that golden moment that you're talking about, sir? If Modi administration takes the initiative, and also we are there in the U.S., work from the U.S. point of view. If the administrations work together and incentivize this entire thing, for example, let me just put the numbers. It's quite possible that we could freeze China to 18 trillion, to maybe 1%, 2% GDP growth. India's, even though far behind right now, $2.53 trillion. I said $18 trillion. China is 18. India is about 3 trillion. And its growth rate could go double digit with what is just happened with this golden moment, because let's say huge exports to United States. Then on top of that, the same structure will export to EU, to rest of Asia. So India could become the global manufacturer like China had become behind the United States of America. The United States of America first, India second. In terms of overall economy, let's look at 2047. That's the aspiration of India, 100 years. Let's look at India to be the number 2 economy by 1947 and not third economy. If we are able to freeze China to where it's at and transfer all that to India. So do you see because there are talks of bilateral trade agreement, and you're saying that India is probably the only country where the channel of discussion is still open. Do you see the tariffs going down in any way in the coming years, sir, in the near future? If the bilateral trade agreement takes place, it's going to be probably max 10%, probably be zero. Oh, probably bilateral trade agreement will be probably zero. And, even on all the military hardware United States wants to sell to India, that's quite possible that it could do that if India gets an opportunity to replace China as the manufacturer of the world. Mr. Kumar, I want to in fact ask you, you're a White House insider. Could you just give us a grapevine of what actually went behind in deciding these tariffs? Well, actually, with respect to the tariffs, which they come up with, how they calculate the tariffs, and then half of it, reciprocal tariffs. That is the number of people. Howard Lutnick, that's the Commerce Secretary. He played a huge role in it. And of course, Peter Navarro. And from the outside, Steve Bannon. That's where these policies came from. It's part of the mega movement. And, and the other person I will add to that is Scott Bessent, Treasury Secretary. He played a significant role in coming up with the with this reciprocal tariff chart and a decision to take half of it and kind of just level the playing field at least halfway. And so that's how, and of course we, myself, our company,
and the Republican Hindu Coalition, the Hindu and Indian Coalition of RNC, we have been pushing very hard for two things. One, a minimum of sustained tariffs on Chinese imports of 50%. That's one we have been pushing very hard. At the same time, pushing very hard to have a bilateral trade agreement with Bharat so that the tariffs there become zero. So that's both inside the government and outside the government effort I have pointed out to you. Can we put a timeline to the bilateral trade agreements? By when do you think it is likely to, fructify or realize? I would like to have it by 2025, but I realize that in a way, both President Trump and Prime Minister Modi are somewhat stubborn people. So there will be some tough negotiations. And so by the end of, let's say, summer of 2026, it definitely should happen. Okay. Mr. Kumar, one of the very visible after effects of Trump's decision is the way the global markets are reacting. In fact, Wall Street yesterday witnessed one of the biggest falls in the past 5 years. How do you want to look at that? How do you think the world is looking at this entire, the tariff war that, so to say, is likely to be triggered? A good question. Wall Street is the one that caused the decline of the United States. If it was not Wall Street, who was just looking for cheap labor, all the manufacturing which moved out of the United States into China would not have happened. Besides, Wall Street can look only 3 months down the road, maximum a quarter. Okay? They are looking for the earnings, what the earnings they're going to report in the next quarter, and so forth. Yeah, there's going to be some supply chain disruption, so they say, oh, geez, earnings are going to decline. Yeah, it might decline some, but not a whole lot. It's just like COVID time frame. Wall Street did not predict that in the stock market will go down so much and then come back in the next 6 months to a dramatic level. So Wall Street is never right. They're just not right. They have a very short-term view, but when you take a long-term view, which, by the way, the Chinese do, so when you take a long-term view, I predict the stock market by kind of the same time frame, let's say summer 2026, maybe even as early as the end of 2025, S&P will go up to 6,600, 6,800. Now it's come down to like maybe 5,300 and so forth. I didn't watch today's numbers, but yesterday there was like almost a 4%, 5% decline, and today might be another 2-3%. It's going to reverse itself very quickly. People talk about disruption of supply chains. Look at 1980s under President Reagan. Was the United States importing anything from China? No. Vietnam? No. India? No. How were we functioning then? Phenomenally well. So I want to understand. We are going back to President Reagan 80s plus. I've always said President Trump is Reagan on steroids. And he has just demonstrated his steroids by having these reciprocal tariffs, particularly enlightened with the fact that Chinese goods are going to be more than 54% more expensive, and that is going to drive manufacturing back to the United States and possibly to Bharat in a major, major way.
Okay. Could you, I mean, considering the scenario that we have right now, so now we have the US, which is imposing a 34% tariff on the Chinese products and a 26% tariff on Indian products. Could you draw for us how the supply chains are going to be disrupted and how is it going to be playing up in the next about a year or 2 years, sir? First of all, a correction. On China is 54. 20 was there before, 34 got added, so it's 54%. So 54% is going to be on Chinese goods and 46% on Vietnamese goods. So it depends on what level of products. What will happen is what I call penny parts, dollar parts. They will, you could absorb 54% on them from China itself, okay? Some of it will come from Vietnam, some of it may immediately start coming from India, and more expensive, let's call it $1,000 parts and laptops and those kind of products, that there's going to be a flurry of activity in the United States that they are going to manufacture those products themselves. So there's going to be some disruption, but not a whole lot. Just today, the Indian Minister of Commerce and Industries, Piyush Goyal, said that Indian startup ecosystem needs to focus more on, the international or global technologies, the deep tech and the semiconductors. Do you think India is ready to grab this opportunity, so to say, that this golden moment is throwing at us, sir? Piyush is a great minister and very intelligent, very smart. I've dealt with him before. But he needs to talk to some manufacturers. Yes, semiconductors, yes. But once again, we or India, Bharatiya, they do not have to look at huge capital investments and think of, that you need like Apple or you need Teslas or you need those kind of companies, large conglomerates in India. No. Talk to some manufacturers. Talk to some tech people. Okay? Small businesses. Talk to Jeshri, proximity switch manufacturer in Pune. Okay? Talk to these small companies. What a wonderful opportunity that has been given to them, and take that up there. Focus on SME. Focus on small manufacturing. You could support them by, what do they say, single window type of a arrangement so that these people can start their businesses very quickly. Okay, no government interference, no Inspector Raj, which is a problem for India. So, India's software developed because the inspectors cannot control the software engineers sitting in their living rooms. So they become free of Inspector Raj. That's why India became the powerhouse in software. Now, just keep your inspectors away from manufacturers, small manufacturers, and let's see India flourish. So message to Piyush, control the inspectors, give lower interest rates, more capital to all the businesses who can replace Chinese 500,000 businesses. Wonderful. That's a good dose of optimism that we're getting, sir. One question is, how do you want to respond to those who are saying that this is the beginning of a recession? Oh, I don't think there's any chance of a recession at all. Watch what's happening in the U.S. Congress. We are right now, as we speak today, Senate is working all night long to have the tax legislation. So far the focus has been on tariffs. When the legislation comes out on decreasing the taxes on, let's say, common people, let's say there will be no taxation on Social Security benefits, there will be no
taxes on tips, as well as the corporate tax rate. Right now, they're keeping it at 21%, but President Trump wants to decrease it to 15%. And so regulations are kind of going away anyway. And so the chances of a recession, if there is one, I mean, let's take one, it'll be a very mild, like a 3-month type of a recession. Very, very mild if there is one. I doubt it, because as soon as because this tariff chapter is over, and as soon as the investors see what's happening with taxes, what's happening with capital, because of what is going on with tariffs and all, President Trump has already secured $7 trillion of investment in the United States. If you have that much money coming in, you have wonderful legislation coming in, the chances of recession are minimal. Okay. 5 years from now, how do you see the global order, sir? As an impact of this, in light of the tariffs, 5 years from now, how do you see the global economic order? Well, the United States growth rate is going to become larger. It's going to become, for a developed nation, instead of 3-4%, it will become 4 to 5%. India's growth rate could go to double digit, 8 to 10%, 11%, and so forth. Chinese growth rate come down to like 2%, 3%, their GDP growth. I'm hoping 1%, or I'm hoping 0% for China. So the world order is going to react in that manner. I can also say globally, otherwise, European Union, NATO, they are going to start spending a lot more money on their own self-defense, because President Trump is finished with even allies having to support them. And, you got to pay for European defense, pay yourself. Japan, you got a lot of money. You want to defend yourself? Increase your defense budget. So that's what the global order, India, Bharat will play a very key role. And once again, you're talking 5 years. I don't look 5 years. I look 10 years, 20 years down the road. I'm looking at 1947, and it is 2047. 2047, and it is my biggest wish that, and I'll do everything I can to make sure that India is on its way to beating the GDP of China. Wonderful, sir. There's a lot of buzz going on around you coming to New Delhi as a U.S. ambassador. What do you want to say about that, sir? How true are they? Well, I will just say this, okay. I'm really not actively seeking that position because I think there are lots of other things in my life and business which are happening. I do want to remain quite active, but the administration is considering it. Steve Bannon, from the outside, he just declared that I'm the short list to become the U.S. ambassador to India. President Trump had declared several years ago that I don't care who says what, you are going to be my ambassador to India. He had declared that. And but he had also said that I'm sure you will not refuse if made that offer. Okay, so let's just put it this way. I'm willing and ready to serve my country, the United States, as best as I can. And so we will cross the bridge when it happens in the next couple of months. Wonderful. Mr. Kumar, thank you very much. We would love to see you here in Delhi. Thank you very much for talking to us. It was lovely talking to you. Thank you very much, sir. Thank you.
MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH中方多次强调，贸易战、关税战没有赢家，保护主义没有出路。中方敦促美方纠正错误做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中国在内的世界各国磋商解决贸易分歧。आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग शिप भी बन सकती है। The US is taking on all countries in terms of countries that have bilateral trade surpluses with the US. So the US has deficits with China, Canada, Mexico, India, Korea, Japan. So those are the countries that are being slapped with higher tariffs. And the only country so far that has retaliated is China. The EU, which This week on Get Me Right, should India accept the invite of Xi Jinping for an elephant-dragon tango as the two nations mark 75 years of their diplomatic relations? Or wait to judge little more, the game of Chinese checkers from Beijing? Also, that preacher of democratic values to the rest of the world is Europe backsliding. What does ban on Marine Le Pen contesting elections in France tell us about the health of democracy in Europe? And finally, is Naxalism on its deathbed in India? We explore. Join me this weekend on your favorite deep dive show only on Republic TV. from Asia's largest news headquarters, setting the agenda for Bharat. You're watching Republic. Very good afternoon and thank you for tuning in. You're watching live and breaking at 4 p.m. I'm Suesha Sam. In this edition, we'll get you the latest from Prime Minister's development push in Tamil Nadu to Amit Shah's visit to Jammu and Kashmir. That and much more that's lined up. First, a quick check of the headlines we're tracking. Prime Minister Modi inaugurates projects worth 700 crore rupees in Tamil Nadu, including the iconic Pamban Bridge after concluding his Sri Lanka visit. भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है. While Thailand breaks protocol by skipping Prime Minister's events, Prime Minister dares him to start medical courses in Tamil. It is a very wrong decision. Not because they do not have a right to protest, they do have a right to protest. But I would accuse them of spreading a blatant misinformation campaign. Massive showdown over Waqf Amendment Bill. AIMPLB faces flack over street anarchy call against historic reform. सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना
सीए एनआरसी का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग सीए एनआरसी को बिहार में लागू नहीं होने देंगे. After Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, Tejasvi Yadav calls for overturning Waqf Act, says it will be tossed into dustbin if they are elected to power. Security heightened across West Bengal amid Ram Navmi celebrations. Over 2,500 processions planned across the state. Grand Ram Navmi celebrations underway across the country. Lakhs of devotees gather for Surya Tilak of Ram Lalla in Ayodhya. Well, amid the language row, Prime Minister Modi has dared MK Stalin government to start medical courses in Tamil language. He said that these courses will help poor people. Stalin, who did not even greet Prime Minister Narendra Modi while his visit to Tamil Nadu, completely skipping all the events, asking that the Modi government must come clear on delimitation, and the several statements that have been made by MK Stalin on the language row. Prime Minister has dared MK Stalin to start courses in Tamil for medical. Listen it. देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है. अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है वो भी डॉक्टर बन सकते हैं. मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके. Senior Executive Editor Abhishek Kapoor with us on the broadcast to throw light on these developments. Abhishek, it is one thing to politicize the language row and another to be practical about it. With such a strong counter by Prime Minister Narendra Modi, what do you think MK Stalin is expected to do? Well, you're absolutely right. And it's not just about being practical, it's about practicing what you preach. And clearly, as it comes out, if Tamil Nadu does not have courses in engineering and sciences and medicine in Tamil, then obviously Stalin has a bit of an egg on his face because the whole language row over the last couple of months, as it has panned out with Stalin leading from the front, is about Tamil subculture, its importance, and Tamil subnationalism and Tamil pride and whatnot. And in that backdrop, for the Prime Minister to be, indicating that this is a gap in Tamil education and that poor in Tamil Nadu could be suffering and that they should not be getting the kind of level playing field that they ideally should get by studying branches like medicine and engineering in their mother tongue, which is Tamil. Obviously, I think it's an interesting situation now for Stalin to really explain, given also the fact that he has sort of been a little petulant in not being with the Prime Minister when such an important infrastructure and geostrategic project of geostrategic significance like the Pamban Bridge has been inaugurated apart from other projects. I think this sets a very interesting Tamil debate with the Prime Minister really holding a mirror to MK Stalin. Very true, Abhishek. And let me also take this point to Sarada, who is with us on the broadcast. Sarada, fact also remains that it is about the larger good of the people of Tamil Nadu to be able to have access to opportunities outside of Tamil Nadu. And that will largely happen when there is uniformity in terms of the language that everybody learns. With this kind of an argument coming in from the Prime Minister, is MK Stalin expected to take a step back? How will he possibly counter this? Well,
The DMK has been having issues with the national education policy and to implement the third language in the state. While it has been made very clear that Hindi need not be imposed as a third language in the state of Tamil Nadu, but it could be any Indian language that could help them, especially the students of Tamil Nadu, to get out of the state, to get a new job somewhere else in the country. However, the DMK government has been consistently sticking on to their policy that was passed in 1978, stating that they had only followed the two-language policy of English and Tamil in the state of Tamil Nadu. However, with the policy row still going on between the centre and DMK, the DMK is now planning to move to the Supreme Court to pass an order after stating that they have a state law and that the centre cannot intervene in this particular state law. What we need to see here is MK Stalin breaking the protocol by not inviting Prime Minister Narendra Modi into Rameswaram while he landed from Sri Lanka. However, he boycotted this particular visit, stating that he wanted Narendra Modi to know that the DMK government is against the policies that the centre has been implementing, let it be delimitation, national education policy, the Waqf amendment bill, and so on and so forth. There's a list, huge list that the DMK government has been stating that they are not okay with the centre implementing in the state. While it comes to the language rule, it is not new that already Amit Shah has already informed that even the UPSC and the police services exam in the state, including the CRPF exams that's been taken in Tamil Nadu, can be taken in Tamil, and the permission was granted to the state of Tamil Nadu at least a year back. However, the state has not implemented it. Now Prime Minister Narendra Modi's statement comes amidst between this, where Stalin quotes that stating that he would not accept Hindi or any other language in the state except for Tamil Nadu. So we can see this as the DMK politicizing the issue with only being Hindi as a language that could be spoken in North India and not anywhere in the South. Also, there have been multiple statements made by the ministers of DMK stating that if a person reads Hindi, they would not be able to go forward in their life, but only with Tamil they would be able to grow up in their life, because it depends on the syllabus they learn and not the language. However, we can also note that the multiple institutions that in Tamil Nadu that is run by the DMK are CBSE schools and colleges that are run by them also have the language of Hindi being learned by the students. However, this opportunity is only stopped for the government schools. However, we can see that the Stalin government now planning to move to the Supreme Court, asking the centre to not interfere with the education policy in the state. All right, Sarada, I request you to stay on with us. We have more breaking news coming in. Let's quickly tell our viewers how Tamil Nadu Congress President K. Selva Peruthangai has, along with other party cadres, staged a black flag protest in Saidapet in Chennai, showing the protest against Prime Minister Narendra Modi's visit to Rameswaram. In fact, PM Modi, who was in Rameswaram to inaugurate the Pamban vertical lift railway bridge. Meanwhile, Tamil Nadu's Chief Minister MK Stalin, who skipped official protocol and has not received Prime Minister Modi upon his landing in Rameswaram. He also went on to skip the meeting with Prime Minister Narendra Modi. Sarada, I want to come back to you to get details of Congress's black flag protests against Prime Minister Modi's visit. Well, the Tamil Nadu Congress chief K. Selva Peruthangai last week announced that the Congress will be having a statewide protest showing black flags to stop Narendra Modi's visit to Rameswaram. They noted that there have been multiple times that the DMK government, who is in alliance with the Congress, has sent multiple letters asking for education funds to be sent to Tamil Nadu and also to not implement the third language policy or NEET or the Waqf amendment bill in the state of Tamil Nadu. And Congress leader noted that if Narendra Modi is planning to come to Rameswaram to open the Pamban Bridge, the entire Congress cadres would be showing a black flag protest. So today in Chennai around 12 a.m. 12 noon when Narendra Modi landed in Rameswaram, the Congress decided to have a black flag protest where they raised slogans stating that the BJP is following RSS methodology and that they did not want that to be implemented in the land of Tamil Nadu as well. Just so many questions around these developments, Sarada, because fact remains that this was about a huge development push in Tamil Nadu, and it is basic protocol for the Chief Minister to greet the Prime Minister and also encourage this push. So in that sense, how is this
step by Stalin being viewed by the people on the ground? Well, we can see that through this particular event that Stalin missing to invite or welcome Prime Minister Narendra Modi to the land of Rameswaram. And speaking to the public in Uti, M.K. Stalin today morning stated that he is on purpose skipping this particular meet. He also added that this is how he can show to Prime Minister Narendra Modi on how the DMK government is against the centre on pushing the policies to the state of Tamil Nadu. Though it is a big protocol that the Chief Minister is missing on, he did not worry about all that and said that it is Tamil Nadu's wish to not have delimitation. He also focused on stating that if... Right, Sarda, I'm sorry I'm having to interrupt you here. Please stay on with us. Mr. C.R. Keswan is with us on the phone line. Your response on what happened in Tamil Nadu, Prime Minister Modi's big development push, but Stalin not just skipping the events, questioning the BJP to clarify on delimitation, and Prime Minister's retort to M.K. Stalin when it comes to the language row. Happy Ram Navmi to you and all your viewers. I think first we'd like to thank the Prime Minister for dedicating this modern engineering marvel to Tamil Nadu. And I think the Prime Minister has always believed in combining technology with, our roots of Bharatiyata. And this place is of such spiritual significance, and this now has the most modern technology. But what is important is, the Congress, which was in government, had filed an affidavit in the Supreme Court saying there is no historical proof of Lord Ram. And the DMK leaders had said, which, engineering college did Ram study and did he civil engineering? That's how they mocked it. But today the Prime Minister has chosen Ram Navami to, inaugurate this new Pamban Bridge, which will give access to one of the most spiritually significant pilgrimage stones, which has a civilizational link with Lord Rama himself. So we thank the Prime Minister for that. And also, the Chief Minister of Tamil Nadu skipping this function, shows how morally bankrupt the DMK government is. And the Prime Minister very clearly exposed the DMK government in its speech today, listing out what our government has done in the last 10 years, which is precisely why they didn't come, because sitting there in the meeting, it would have completely exposed the lies of the DMK, which has been, failing the people of Tamil Nadu on all fronts. The Prime Minister, Modi ji, very clearly said how in the last 10 years, the budget, has increased 3 times, and DMK was in government with the, Congress party. They were one of the most important allies, but still they deprived and denied Tamil Nadu of their due. And see here today, the railway budget has increased 7 times to 6,000 crores. Not only that, all the developmental schemes which the Prime Minister said, the infrastructure push. Just take Ayushman Bharat. 8,000 crore rupees have been saved. 1 crore treatments have been given by the central government. And I think Prime Minister also, exposed the duplicity and the hypocrisy of the DMK. The DMK talks about Tamil language. And, half of them don't even have Tamil names. And today the Prime Minister has very clearly exposed the hypocrisy of the DMK, saying they don't even sign in Tamil. And I think that's a very telling statement about the DMK and exposes their double standards and double game. And I think the people of Tamil Nadu are watching this. They know that Prime Minister Modi ji has had unswerving commitment when it comes to promoting the interests of Tamil people and also respecting our culture and heritage. It was Prime Minister Narendra Modi ji who declared Subramanya Bharati's birthday as National Language Day, be it installing the Sengol, a Tamil identity, Kashi Tamil Sangam, Saurashtra Tamil Sangam, and see how the Prime Minister has taken forward the message of Thiruvalluvar, the timeless wisdom. Whether it's, translating it into 13 languages, now creating Thiruvalluvar cultural centers across the world. Prime Minister Modi ji, like no other Prime Minister before, has done so much for Tamil Nadu. And today, again, he's, dedicated this most important Pamban Bridge, which will link the mainland of India to the historical place of Rameswaram. We thank him for that. But it's time for the DMK government now to answer, because whether it's engineering and doctoral courses across the country, many states are offering it so that students and youth can learn in their mother tongue. But Tamil Nadu is depriving the students, and like how they are cheating people, on the 3-language policy where, private private schools are, availing that only government children are being denied of learning 3rd languages. This hypocrisy of the DMK has been exposed by the Prime Minister, and this is probably why they skipped the function, and the people are watching, the behavior of the DMK government, and they'll teach them a fitting lesson in the coming days. All right, C.R. Keswan, many thanks for sharing your views.
with us. Shifting focus now, as Waqf JPC Chairman Jagdambika Pal condemned the street protests against the landmark piece of legislation, saying it was aimed at bringing a qualitative difference to the lives of the poor Muslims. Unsparing in his criticism of the dissenters, the senior BJP leader said that no public utility was raised on Waqf land that were donated for the welfare of the community. Getting you all the details in this report. Senior BJP MP Jagdambika Pal, who headed the Joint Parliamentary Committee on the Waqf Amendment Bill, condemned the ongoing street protests against the reformist legislation. Coming out in favor of the bill, which was signed into law by President Draupadi Murmu after its passage by both houses of Parliament, the BJP said it marked the culmination of a long struggle. In a scathing takedown of the dissenters and critics of the landmark law, he said not a single public utility was raised on Waqf land that were donated for the welfare of poor Muslims. इस कानून का सबसे बड़ा फायदा है कि वक़्फ जो करता था, जिसको वाकिफ़ कहते हैं, वाकिफ़ की इंटेंशन होता था कि हम अपनी कमाई का गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे वक़्फ करते हैं और उसके इनकम से गरीब को, पिछड़ों को, मुसलमान को, महिलाओं को, बच्चों को एजुकेशन में, हेल्थ में या ज़रूरतमंदों को उसकी मदद मिले। लेकिन देश की रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद तीसरे नंबर में सबसे ज़्यादा वक़्फ की प्रॉपर्टी देश में है, थर्ड लार्जेस्ट वक़्फ प्रॉपर्टी इन द कंट्री। लेकिन इसके बावजूद भी न कहीं कोई यूनिवर्सिटी था, न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज था, न मेडिकल कॉलेज था, और उसका फ़ायदा जो केयरटेकर, मुतवल्ली हो गए या वक्फ बोर्ड के अहलकार लोगों को मिलता था। तो ये अपने आप में एक वक्फ के कानून में संशोधन में बहुत बड़ा सुधारवादी कदम है। मुसलमान, पिछड़े, जो पसमानदा गरीब हैं, उनकी स्थिति SC ST से भी बदतर है, शेड्यूल कास्ट से भी। मुस्लिम महिलाएं तो 51.9% इलिटरेट हैं, हायर एजुकेशन में केवल 5% है। तो ऐसे लोगों के ज़िंदगी में सुधार आना चाहिए। And well, after Mamata Banerjee, RJD leader and former Bihar Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav promised that the Waqf Amendment Bill will be tossed into the dustbin if his party formed a government in Bihar. He said that his party had moved the Supreme Court against the controversial legislation which was passed in the Parliament earlier this week. But Waqf property also, it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. सरकार बना करके इस कानून को कूड़ेदान में फेंकना। CA NRC का भी हम लोगों ने प्रस्ताव जो है भेजा था कि नहीं भेजा था कि किसी भी कीमत पे हम लोग CA NRC को बिहार में लागू नहीं होने देंगे। सब लोगों ने पास करके भेजा था। Meanwhile, BJP has taken a jibe on Tejashwi Yadav over his comment on the Waqf bill. Listen in. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एंटाइटल डायनेस भड़काने की, बहकाने की और चिल्लाने की कोशिश अभी भी कर रहे हैं और AIMPLB को पूरा समर्थन दे रहे हैं। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि मैं वक्फ का बिल सरकार आने पर कूड़ेदान में डाल दूंगा। कभी बिल को फाड़ देना, ऑर्डिनेंस को फाड़ देना, कभी कूड़ेदान में डालने की बात करना, ये बताता है कि इनके मन में संविधान नहीं, केवल वोट बैंक की दुकान चलती है। राहुल गांधी कहते हैं कि देखिए, अब माइनॉरिटीज पर हमला किया जाएगा, पहले मुस्लिम थे, अब क्रिश्चियन पर हमला किया जाएगा। राहुल गांधी जी, तब आप क्यों चुप रहे जब KCBC और CBCI ने कहा कि वो चाहता है वक्त संशोधन हो? We now get you more responses from the BJP over the opposition's call for street anarchy in a bid to oppose the biggest reform of 2025. Listen in. देखिए, प्रोटेस्ट करना, धरना प्रदर्शन करना, ये किसी का भी संवैधानिक अधिकार है। कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है।
एक तो ये है कि पीसफुली होना चाहिए, दूसरे ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल को सही से पढ़ा नहीं है। अगर ये बिल को सही से पढ़ लेते तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। सवाल ये है कि जितने मेंबर्स हैं पर्सनल बोर्ड के, आमतौर से सबके पास वक्फ बोर्ड की जगह है। असदुद्दीन अवैसी के पास हज़ार गज जगह है। बोर्ड के जो जनरल सेक्रेटरी हैं फजलुर रहमान मुजद्दिदी साहब, उनके पास राजस्थान में हज़ारों गज जगह है बोर्ड की। जमीयत उलमा हिंद एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके 2 प्रेसिडेंट हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक है, प्रेसिडेंट 2 हैं, और दोनों ने अपने अलग अलग ऑफिस बना रखे हैं ITO जैसी प्राइम लोकेशन पर। एक 2 बीघे लिए बैठा है 2000 गज, एक के पास 1000 गज है। ये सैकड़ों करोड़ रुपए की जगह है जो वक्फ बोर्ड की है, और ये लोग उसका किराया तक नहीं देते। इनको डर ये है कि हमारी जगहों का अब नंबर आ गया है, इसलिए मुसलमानों को सामने करना चाहते हैं सरकार के। मुसलमानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और जिसके लिए ये उकसा रहे हैं, जिसके लिए भड़का रहे हैं, कम से कम उस बिल को पढ़ तो लें। Prime Minister Modi went to visit Hisar. Will be going to visit Hisar on the 14th of April to inaugurate the city's airport and lay the foundation stone of the terminal. Expressing pride over Prime Minister's visit, Haryana BJP President Mohanlal Badoli said that Prime Minister keeps state close to his heart. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं। पहले सुबह 9 बजे हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, वहां से उड़ान शुरू होंगी, और अयोध्या की पहली उड़ान हिसार से, और एक टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। वहाँ एक बड़ा टर्मिनल बनेगा। उसके बाद 11 बजे यमुनानगर में जो पावर प्लांट है उसको अपग्रेड करते हुए 800 मेगावाट का, उसका भी शिलान्यास करके जाएंगे, और हरियाणा प्रदेश में 24 घंटे लोगों को बिजली उपलब्ध रहे, इसके लिए बहुत बड़ी सौगात हरियाणा को मिलेगी। As the nation gears up for Ram Navmi, Jharkhand's Girid SP Bimal Kumar informed the security has been beefed up in the city with proper surveillance and barricades. शासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सभी लोगों की बहुत अच्छा व्यवस्था है। और आज देख रहे हैं क्रिकेटिंग का मामला हो या पुलिस बल का हो, सभी का अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं। SP साहब भी लगातार बैठे हुए थे, SDO साहब से, DSP साहब, इंस्पेक्टर, सभी लोग आकर अच्छा मेहनत प्रयास कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक ढंग से इस त्यौहार को हम लोग मनाएं। ये नहीं कि त्यौहार को हम लोग किसी तरह मना के चल जाएंगे। इस त्यौहार को हम लोग बहुत ढंग से मना रहे हैं। जिला प्रशासन को धन्यवाद देते हैं, पुलिस प्रशासन धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार शाम तक हम लोग अच्छा माहौल में अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने त्यौहार को मनाएंगे। राम जी का आशीर्वाद और बाबा हनुमान जी का आशीर्वाद जब लेकर हम लोग अपने घर हो जाएंगे। Questioning the conspicuous absence of leader of opposition Lok Sabha's Rahul Gandhi and Congress MP from Wayanad, Priyanka Gandhi Vadra during the Waqf Amendment Bill 2025 debate in Parliament, Bharat Rashtra Samiti MLC K. Kavita, who issued a strong statement condemning the lack of responsibility and seriousness shown by the Congress leadership. When it actually matters, when the issue is on the boil, when the issue of protecting the rights of minorities is there, they are not there in the parliament, neither they are serious about defending or speaking on the bill. Why did Rahul Gandhi ji not speak on this important bill when he talks about peace, when he talks about Mohabbat ka dukaan, and it is the contrary that is happening in this nation today. Why isn't Mr. Rahul Gandhi speaking in the parliament on this issue? He should have spoken. I mean, very, very disappointed to see that the main leader of the opposition of our nation does not stand up for more than 30 crore people of this nation. It is unfortunate. Himachal Pradesh Congress President Pratibha Singh announced that a statue of the former Himachal Pradesh CM Vidarbha Singh will be unveiled on the 23rd of January on his birth anniversary. She emphasized that the purpose of building the statue was to do welfare work, and it was not the demand of the family but of the people of Himachal Pradesh.
Union Minister of State for Railways and Food Processing Ravneet Singh Bittu has fervently appealed to senior farmer leader Jagjit Singh Dalewal to end his fast and join talks with the central government on farmer demands. He said that he was making an appeal to Dalewal on behalf of the central government and the people of Punjab to end the hunger strike and come forward for discussion with the central government. 5 construction workers were trapped under the debris after a canteen collapsed in the Jagdishpura police station area of Agra earlier today. According to sources, construction was ongoing at the canteen when the tragedy happened. Police said 4 workers have already been rescued and further rescue operations were ongoing to locate the lone trapped worker. Loha Mandi ACP Mayank Tiwari said there are few of 2 more workers being stuck under the debris. Defence Minister Rajnath Singh commended country's Navy for always emerging as the first responder in times of any unfortunate disaster or trouble in the entire Indian Ocean region. He further highlighted that Indian Navy remains committed towards securing free navigation, rules-based order, anti-piracy and peace and stability in the region. Time now for a short commercial break. On the other side, we get you details of how amid Ram Navmi celebrations, anti-national slogans were raised at Jadavpur University. QS and THE, the world's foremost university rankings organizations, have ranked Amity amongst the top 3% universities globally, making it among the very few Indian universities to be included in both rankings. Yet another top ranking for Amity University. सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े क्या निराला MDH मसाला There will be no global recession. So, firstly, there will be no US recession, there will be no global recession. This talk of recession is completely overblown. People talk of recession partly because of the Smoot-Hawley tariffs of 1930. That was an 80% tariff. Prime Minister Modi inaugurates projects worth 700 crore rupees in Tamil Nadu, including the iconic Pamban Bridge, after concluding his Sri Lanka visit. देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें। While Stalin breaks protocol by skipping Prime Minister's events, Prime Minister dares him to start medical courses in Tamil. It is a very wrong decision. Not because they do not have a right to protest, they do have a right to protest. But I would accuse them of spreading a militant IPL खेल चुके आज आप ट्रेन में जब अहमदाबाद खेल रहे थे तब शायद आप एम्पायर थे मैं देखने गया मैं स्लीप डाउन कर रहे थे में जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता और 96 में आप लोगों ने वर्ल्ड कप जीता दोनों ने एक प्रकार से क्रिकेट दुनिया को बदल दिया और मैं तो मानता हूं अगर T20 का जन्म हुआ तो 96 की आपके मैच के तरीके में से पैदा हुआ है। बाकी वैसे भी सुनना चाहूंगा मैं कुछ आजकल क्या कर रहे हैं क्या बताना चाहेंगे
अभी क्रिकेट के साथ नाता जैसा आप अभी भी कोचिंग कर रहे हैं. Most of these guys are involved with cricket at the moment, and I think today they want more pressure than playing in the finals, meeting you. I think I will talk on a different topic there. Yes, we won the World Cup in '96, but one of the reasons why we won because there are two teams who didn't come to Sri Lanka, West Indies and Australia. At the time, we were the number 4. Yes, and India helped us send a team here for us to play to show the world that it's a secure place, and that's one of the reasons that Sri Lanka went on to win the World Cup. So we are so grateful to India. मुझे याद है उस समय भारत ने जब निर्णय किया कि हम तो जाएंगे, तो बम ब्लास्ट के बाद सारी टीमें भाग रही थी और मैंने देखा था कि उस समय आपके सब प्लेयर्स ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया था कि भारत ने बहुत ही खेलदिली दिखाई है, क्योंकि जो मुसीबत श्रीलंका के लोग झेल रहे हैं उसको अपने नसीब पे नहीं छोड़ा. वे भी आए, चलो हम भी आते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो इसको आपके यहाँ खेल जगत ने बहुत अप्रिशिएट किया था. आज भी भारत के लोग उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था उसमें. एक तरफ बम ब्लास्ट थे, दूसरी तरफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था और बम ब्लास्ट के सामने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीता था. और इतना ही नहीं है, वो स्पिरिट आज भी है. जैसे 96 उस बम ब्लास्ट ने पूरे श्रीलंका को हिला दिया था. 29 में यहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ और चर्च के अंदर जिस प्रकार की घटना हुई, उसके तुरंत बाद मैं पहला दुनिया का कोई नेता था जो श्रीलंका आया था. उस समय बम ब्लास्ट के बाद भी भारत की टीम आई थी. इस बार बम ब्लास्ट के बाद मैं आया, बट द स्पिरिट कंटिन्यू है. श्रीलंका के हर सुख दुख में साथ रहना, ये स्पिरिट भारत का वैसा का वैसा है. As a Sri Lankan, as a neighborhood country, I umpired the World Cup final in your Ahmedabad, the ground, and that is the biggest ground in the whole world. Actually, that was a fantastic atmosphere and fantastic ground for the cricket, and I think everyone loves to play and umpire over there. So my first tour was to India in 1990. My first year, that was my first tour. And the same memories I have because I was there in India for a month. I came about 5 days ago. We regularly visit India, and I have to say, whenever Sri Lanka in crisis, especially in financially, India always steps up and give that support. So we ever thank to India because we feel that India is our brother. So we feel home when we go to India. So thank you, sir. Thank you. Like Ramesh said, when we had the unrest, the problems in Sri Lanka, we were without the petrol, diesel, no current, no lights, and I think you and the government help us a lot. So we always grateful and thank you for helping our country. We are grateful for you, sir, for helping Sri Lanka. And also, I have a small request, sir. As a coach of Sri Lanka cricket at the moment, we play all over Sri Lanka except Jaffna. I want, as a coach of Sri Lanka cricket, I would love to, if India can help us to bring international ground in Jaffna, there will be a big help for the people in Jaffna, north and eastern part. So that we have lack at the moment. So we will not isolate a northern part. So they will also come very closely work with the Sri Lanka cricket, and we are working on it at the moment, but it will get more closer if you play international games in Jaffna. So I have a small request, if can help to bring something. मुझे जय सूर्या के मुंह से ये सारी बातें सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये बात सही है. जहाँ तक भारत का हमेशा रहता है कि नेबरहुड फर्स्ट, जितना जल्दी हम पड़ोसी देशों की किसी भी संकट में मदद कर सकते हैं. अभी आपने देखा हो म्यांमार में भूकंप आया तो हम फर्स्ट रिस्पोंडेंट थे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे
पड़ोस के मित्र देशों के लिए चिंता सबसे पहले करना भारत की जिम्मेवारी भी। बड़ा देश है और जब ये आर्थिक संकट आया और बहुत बड़ी परिस्थिति थी तो भारत का तो एक ही मत था कि भाई हम श्रीलंका इस संकट में से बाहर आना चाहिए और हम उसको पूरी मदद करेंगे। इस भूमिका से हमने ये कोशिश की। हम तो इसे अपना कर्तव्य मानते हैं और मैं आज भी आपने देखा होगा मैंने कई नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने जाफना की चिंता की है और ये अपने आप में बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि श्रीलंका का एक क्रिकेट लीडर जाफना में भी क्रिकेट होना चाहिए, वो बाहर नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल गेम वहाँ भी खेली जानी चाहिए। ये विचार अपने आप में बहुत बड़ी ताकत देता है और मैं आपको विश्वास देता हूँ मेरी टीम इस पर ज़रूर कुछ नोट करेगी कैसे किया जा सकता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने समय निकाला, पुरानी यादें ताज़ा हुई, सबके चेहरे रहने के लिए मौका मिल गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि भारत के साथ अपना नाता बना रहे और आप जो भी साहस करें, मेरी तरफ से जो भी आपको सहयोग हो सकता है करें। And those are the pictures you saw on your screens where Prime Minister Narendra Modi had also tweeted about his Cricket Connect, in which he spoke about how delighted he was to interact with the members of the 1996 Sri Lankan cricket team that had won the World Cup last year. That year, I beg your pardon. This team captured the imagination of countless sports lovers, their entire feat that we just played out for our viewers. And well, weeks after the massive showdown on campus over the promotion of urban Naxal elements, Ram Navmi celebrations were held at the Jadavpur University campus. At the same time, while the celebrations were on, there were old graffitis and posters with slogans like Azadi and Free Kashmir that were seen on the walls. Later, the graffitis and posters were covered by the national flag. You see those pictures on your screens amid Ram Navmi processions. In West Bengal, what happened at the Jadavpur University that had been recently making headlines over its anti-India posters. And there you see how the two literally on the same wall together. Let's listen in to more responses that have come in. ये हमारा बदनसीब है जो हम लोग का देश का जो नेशनल एंथम है, जातीय संगीत है, वो गीत स्टूडेंट लोग को सिखाने के लिए वो लोग एक गीत गाएगा, इसके लिए हमको खून देना पड़ा। उस देश में ये क्या भारत का जातीय संगीत क्या सुदान में गाया ना, तो यह आज़ाद कश्मीर लिखा। हम लोग इतना लड़ाई कर रहे हैं देश के लिए, देश का अखंडता के लिए, ये दुख का बात है। और ये जो जादवपुर यूनिवर्सिटी 5 स्टार यूनिवर्सिटी है, धर्म अपना बात है, दिल का बात है, ये डिवीजन का बात नहीं है। एक ही धर्म है, राम को सब मानता है। कोई बोलता है जय श्री राम, कोई उसका खिलाफ आवाज उठाता है, क्या बात पता नहीं। And cutting across to Kishale to get further details of what really transpired at the Jadavpur University. While we understand that those Break India graffiti that had been flashed in full swing, where amid the Ram Navmi procession, we also saw how the right-wing group of students completely covered that, and Ram Navmi processions took place. Well, exactly, in Bengal, Ram Navami was observed with much celebrations, grandeur all over the state. Now, we knew that there were certain aspects that Mamata Banerjee had made comments such as there might be problems during Ram Navami, and the police also indicated several times that they needed more security than usual on this date. Now, what happened in Jadavpur University is very interesting. We saw a few days back, we had a huge coverage about it, how anti-India posters and graffitis such as Divide Kashmir and Azad Kashmir had come up in Jadavpur University.
university, on the walls of the university. Now, nationalist students today covered all these graffitis with national flags at various areas within the university campus, and they observed Ram Navami within the campus. Now, previously, when they were requesting for permission from the university authorities for Ram Navami celebrations, there was some complications that arose. But we saw that during Ramadan was observed within the university campus. Saraswati Puja was observed at a point of time when Saraswati Puja was there. So why not Ram Navami was the question that the students were raising. And ultimately today Ram Navami was observed by the students who called themselves nationalists, and they clearly sent out a message by covering all the anti-India, anti-national posters with Indian flags and other graffitis as well. So at one hand, the whole state saw much celebrations across the length and breadth of the state during this Ram Navami celebrations today, and on the other hand, in Jadavpur University there was a strong message against all these anti-national elements that their days are over, and the nationalists took over the university in a way and covered these anti-national divide India graffitis with national flags, and also observed Ram Navami within the university campus. Shall I continue talking to us while a clear message was sent out to the separatists at the university? But is there peace on the ground so far between the two groups? How has the faculty and senior management really responded? Well, till now there has been no conflicts within the campus among these two groups. However, there were slogans, and there were the other group was also answering in slogans. So a certain situation was there at certain points of time, but that did not escalate, and right now the Ram Navami celebrations has been peaceful within the university campus. But outside the university, in a few places, there were in fact allegations that the police tried to, West Bengal police and Kolkata police tried to stop a few of these rallies. One of those was led by Locket Chatterjee of BJP. She was stopped at a point of time, but later on the police had to give permission for her to go ahead. So there were certain areas where certain rallies were kind of stopped, but later on they were allowed. So till now, peaceful rallies in West Bengal on Ram Navami. Keshla, do stay on. Priyanka Tibrewal from the BJP is with us on the phone line. Priyanka, huge snub to separatists at Jadavpur University. Well, you see, this has become the culture now in West Bengal because of the ruling dispensation, and not just that, because of the kind of activities which have been promulgated so many years in the JU, and the students have been, backed by certain political parties. That is the reason we see all this. Otherwise, I don't understand why so much of havoc for a tradition which is there, Ram Navami, a festival. Why so much of permissions are required to celebrate your festival? No such permission is taken on Muharram, no such permission is taken on Eid, nothing when the Tajiyas come out on the Rasta. But then you need all the permissions when you celebrate a Hindu festival. So you can very well understand that Mamata Banerjee has pushed the state towards the turning of an Islamic state. This is what is happening here. All right, many thanks for speaking to Republic this afternoon. And even as Ram Navami celebrations were underway across several states, police and administration stepped up security measures to ensure there is no unrest. Large number of religious rallies that are expected to take place throughout the day. Part of Bengal that has witnessed unrest during religious processions in the past, prompting the authorities to take preemptive measures this time to avert any such situation. In fact, in Sambal, as Ram Navami processions are underway, security was heightened, and those are the pictures on your screens. We'll have Bitu join us live from Nandigram to give us a sense of how the authorities have ensured no unruly incident takes place. Bitu. Bitu, where are you standing right now? Give us a sense of how the security apparatus has been deployed in Nandigram. देखिए अभी जो कॉन्वॉय है मैं कॉन्वॉय के साथ हूँ
गाड़ी में हूँ और अभी ये कॉन्वॉय जा रहा है मेचेदा के लिए। मेचेदा में उधर रामनवमी का प्रोसेशन है, उधर नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी वो रैली में पैदल चलेंगे और उसके बाद उनका कोलकाता में बहुत सारा प्रोग्राम है, जैसे इंटली में उनका एक प्रोग्राम है। उसके बाद और एक रैली है पोर्ट एरिया में जहाँ फिराद हकीम का एरिया है जो कोलकाता का मेयर, और उसके बाद भवानीपुर जो ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है उधर में राम मंदिर के सामने शुभेंदु अधिकारी का एक प्रोग्राम है। उधर वो राम मंदिर में आरती उतारेंगे भगवान का। उसके बाद उनका आज का वो जो कर्मसूची है रामनवमी को लेके वो आज समाप्त होगा। तो अभी ये कॉन्वॉय जो है कॉन्वॉय